Films have always been an essential part of our lives, and film festivals are a way to celebrate the art of filmmaking. It provides a platform to bring together filmmakers, film enthusiasts, critics, to showcase the best of cinema to a keen audience. Good morning, everyone. I, Sohani, And I, Unnati, on behalf of Department of Journalism and Mass Communication, cordially welcome you all to our film festival, Avlokan the Creative Kites 2023, organized by the Department of Journalism and Mass Communication, Faculty of Media Studies and Humanities, MRIIRS. We are deeply honored to welcome our Honorable Director General, MREI, Professor Dr. N.C. Wadhwa, sir, Director General, MRIIRS, General R.K. Anand, sir, Director Sports, Sarkar Talwar, sir, who have taken out time from their busy schedule to grace us with their esteemed presence today. it is our great pleasure to extend a very warm welcome to the distinguished and esteemed members of the jury who have graciously agreed to join us for this glorious occasion. Filmmaker Mr. Vijay S. Jodha, founder of the Woodpecker International Film Festival, Mr. Rao Narendra Yadav, Editor-in-Chief of India Africa Today and sports journalist and author, Mr. Vijay Lokpalli. Each of our jury members bring a wealth of experience and expertise in their respective fields. Their presence here today is a testament to their dedication to fostering excellence in education and supporting the next generation of filmmakers and artists. We are also truly delighted to welcome Professor Dr. Maithili Ganju, Dean FMEH, Professor Dr. Shivani Vishisht, Director FMEH, Professor Dr. Kiran Bala, Head of Department of Journalism and Mass Communication, respected faculty members, and last but not the least, we extend a very special welcome to our talented and creative participants whose hard work and passion for excellence is truly inspiring. Each team has poured their heart and soul into their projects. This festival represents the culmination of countless hours of hard work, creativity, and collaboration put by the students, and it is our pleasure to showcase their talents in front of our esteemed judges. We wish you very good luck as we embark upon this journey together. Once again, a very hearty and sincere greeting to all present here as audience. Lamp lighting is an auspicious ritual to invoke the blessings of the goddess Saraswati and mark the beginning of a positive and fruitful program ahead. So, I invite all our esteemed guests for a traditional lamp lighting ceremony. वीणावादिनि वरदे वीणावादिनि वरदे प्रिय स्वतंत्र रवमिय मंत्रणव प्रिय स्वतंत्र रवमिय मंत्रणव भारत में भर दे वरदे 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 वीणावादिनि वरदे वीणावादिनि वरदे काठ अंध उरके बंधन स्थय काठ अंध उरके बंधन स्थय जननी ज्योतिर्मय निर्झर As a token of our gratitude, we request to present the planters and mementos to the jury and guests.
I request Honorable Director General Sir to present the planter and memento to Mr. Vijay S. Chodha. Now, I request Sarkar Talwar sir to present the planter and memento to Mr. Rao Narendra Yadav. Now, I request R.K. Anand sir to present the planter and memento to Mr. Vijay Lokpalli. To take our event forward now, I would like to request Professor Dr. Maithili Ganju Ma'am, Dean FMEH, to come on stage for the welcome address. A very good morning to all present here and also to those who are watching us live, because a lot of participants were unable to come here in person, but for their sake we have actually made this particular event live. I begin by formally and humbly welcoming all the guests present here, and I would begin by taking a few names of our dignitaries on the first bench. To begin with, Vijay Chodha sir, thank you so much for taking your time out. Mr. Yadav sir, thank you for your presence as well. Mr. Vijay Lokpalli, always our guardian angel. Welcome to be in this event with us today, sir. I would sort of not be able to start until I actually extend my very, very warm welcome with a lot of gratitude for my seniors in the university, starting with our dear Vadva sir, who, in my understanding, is the man behind the concept of film festival in Manav Rachna. Sir has been associated with the film festival even before I joined in. And for me, he's been the person who's, it's synonymous with film festival in the Department of Journalism and Mass Communication. I will again like to thank Sarkar sir for his continuous encouragement in one way or the other. And of course, our dear DG sir, who has always been very sort of gracious towards our department and towards the faculty in particular. With that, I move to to welcoming each one of you, my director, my HOD, a lot of students who are walking in here, my dear faculty members who have been the people behind all this show. And this is really my privilege to be able to formally welcome each one of you to our Avlokan 23. As I said, Avlokan, the film festival, is a part of the tradition that the Department of Journalism and Mass Communication has been carrying on for a long, long time, I think since 2009.
And this is one of the dharohar which I got when I joined this place in 2020. I remember in 2020 we had that the one particular film festival which was in person, and immediately after that the COVID struck. So for last 2 years we've been having it in the hybrid mode, which to say the least was more of just trying to get our tradition going rather than getting into the spirit of it as we are doing today with everybody here and a lot of entries. Avlokan is a platform for film festival or a film festival where we basically encourage students of media to come and present their films. Something that they learn, they tend to do it here by sending their films. All of you will agree with me that today filmmaking is not restricted just to media or just to those who learn or are experts in it. Films are now a part of our expression. I think today, just as it was talking or it was later reading or communicating verbally, today films seem to be doing that talking, seem to be doing the advocacy, seem to be doing, the real content circulation because of the digital explosion that has started. Therefore, it becomes very important for us to have platforms like Avlokan, where all filmmakers, all those people who communicate through films are able to come and talk about the issues, talk about the perspectives, talk about the angles that they like to take in order to tell their story. It is with this pride that we hold this particular film festival, and I look forward to all of you having a good time and critically also looking at what is being produced, what is the kind of content that young people are bringing out, and how do we critique it, how do we appreciate it. I look forward to our judges to give us the right direction, because in today's time, any creator learns a lot from the environment. So in that learning, it is critical that we actually take experts' view. And that's how my jury here is going to be evaluating the films and appreciating, the ideas and perspectives that they like. With that, I will wish you all success for the day today, and again extending a very warm welcome for you to learn and do filmmaking. Thank you. Thank you, ma'am, for your kind words. No film festival is complete without music and dance. Now, let us invite Ms. Mihika Sen Gupta for a dance performance on classical Hindi film songs. Please give her a big round of applause. उठे बस अपना मुझको तो
ख्वाब हो, चौदवी का चांद हो। ओ मेरी बाहों से निकल के तू अगर मेरे रास्ते से हट जाएगा, लहरा के पकड़ खा के मेरा साया तेरे तन से लिपट जाएगा। तुम छोड़ो लाख नामा छोड़ते हैं कभी अरमां कि मैं भी साथ रहूंगी रहूं। आँखों में काजल और लटों में काली घटा का बसेरा, सांवली सूरत मोहनी मूरत सावन रुत का सवेरा। जब से ये मुखड़ा दिल में खिला है, दुनिया मेरी गुलजार हुई। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। Thank you, ma'am, for this beautiful performance. May we now request our Honorable Director General MREI, Professor Dr. N.C. Wadhwa sir, to address the gathering. Before I invite sir to address the audience, I would like to give a brief introduction about sir, although it may be a little difficult, but we'll try our best. Yes, sir. Dr. Wadhwa is an Haryana cadre IAS officer who retired in March 2009 as the Labour Commissioner cum Special Secretary, Government of Haryana. He has a sound academic and administrative background. He is a gold medalist, graduate from Delhi University, and again gold medalist, postgraduate from Kurukshetra University in Humanities, and has done his doctorate from Punjab University. His other important assignments include Commissioner of Municipal Corporation at Faridabad, Chief Administrator, Huda, Director, Town and Country Planning, MD, HSIDC, and during these assignments, he was instrumental in planning and execution of prestigious projects of urban development and industrial infrastructure. Dr. N.C. Wadhwa joined Manav Rachna International University in April 2009 as its first Vice Chancellor and enjoyed 2 terms till March 2019, where he has been instrumental in streamlining the working of the university and helped attaining academic excellence and milestone achievement in research and development. He is presently taken over as Director General, Manav Rachna Educational Institutions, and is also the Vice Chairman of Dr. O.P. Bhalla Foundation under the aegis of MREI. Thanks. Good morning. Esteemed members of the jury, Shri Vijay S. Jodha ji, he is a renowned filmmaker. We have another jury member, Shri Rao Narendra Yadav ji, founder of WIFF. Shri Vijay Lokpalli ji, he is sports editor. My colleagues, Lieutenant General R.K. Anand ji, Dr. Sarkar Talwar, my other colleagues, Dr. Maithili Ganju, Dean, Dr. Shivani Vashisht, Dr. Kiran Bala, HOD, Department of Journalism and Mass Communication, Dr. Suman, other guests, faculty members, and dear participants in this film festival from within the campus and from
institutions from various parts of the country. At the very outset, let me extend a very hearty welcome to all our esteemed jury members, our guests, and all the participants. I wish and pray that this annual film festival, Avlokan, achieved its objective. Hopefully, we have very exciting entries into the category of screening of films. We have a photography exhibition also. We have just had a visit of that, and there will be another session on workshop in making of documentary films. This is how today's program is. As Madam Maithili ji has already shared with you, it has been a tradition of Manav Rachna campus to hold annual film festivals right from the year 2012. Luckily, we had very renowned personalities as chief guests. On one of the occasions, Madam Sumitra Mahajanji, who later on became Lok Sabha Speaker, she was our chief guest. The present Finance Minister, Madam Nirmala Sitharamanji, she was chief guest on one of the occasions. And we had Chairman of National Women Commission, 3 different chairperson of National Women Commission on different occasions. Madam Likhi, who is MP, New Delhi Lok Sabha Parliamentary Constituency, she was again our chief guest on one of the occasions. This is how, with great fanfare, with great efforts, we were holding annual film festivals on various emerging areas, important topics like gender equality, women empowerment, environment-related issues, civic amenities, sustainable development goals. It is a long list. And we could not continue holding these annual festivals during COVID period. Of course, you can very well understand that was very, very crucial, difficult period for all of us. Luckily, this has again been revived, and hopefully we will have very exciting entries. You will enjoy screening of those films. And the esteemed jury members who have come from very important backgrounds, they will judge the entries, they will recommend giving awards to these entries. But I would appreciate all those student filmmakers who have put in their efforts, who thought of an idea and have participated in it. We will have 3 types of entries: documentary films, short films, and animated films. And you can very well understand short films are based on a narrative, a story, and animated film is based on an idea. And as far as documentary films are concerned, they are based on real facts of life and ground realities. But if we look at the overall film scenario, film is a very, very creative art. It is, in a way, a reflection of our real life. Lot of things keep on happening around us. We as intellectual
young researchers, students should be aware what is happening around us. We should be very inquisitive, and we should feel sensitized towards those happenings, and then through our creative ideas reflect our way of thinking to people at large, but in a very positive way. Yes, films have a catalyzing effect in the society. Therefore, because films influence us, motivate us, we feel inclined. So, any idea being fed to the society should be portrayed in such a way that it gives balanced portrayal of that idea. We should not resort to demeaning, degrading, or negative imaging of any character, any idea. A filmmaker is expected to observe certain code of conduct. There should be self-imposed discipline and professional ethics guiding us, controlling us, what to project, what not to project. This is how, when we went ahead with the idea of arranging film festivals, our aim and objective was to provide a platform to our students so that they excel, they are able to showcase their ideas, excel in their profession, achieve heights, and then serve the society, serve the nation. But as I said, yes, we have certain professional obligations to perform, to discharge. We have certain duties towards the society, towards the nation. As good citizens and good Samaritans, we are expected to be responsible citizens, insightful citizens, honorable citizens who should not do anything which goes against the basic principles of a democratic setup. We are the largest democracy. We have very rich cultural background. Our forefathers passed on a very enlightened society to us. It is our duty to defend all those values. We have a democratic setup with the ideals of secularism, peace, harmony, brotherhood, development, sustainable development goals. When we go in for any such film making, any short film, any animated films, we should keep in mind these values, and you being part and parcel of media, because you are basically students of journalism and mass communication, and press or media is called fourth estate, fourth pillar of the democracy. And there are certain do's and don'ts. Press is expected, media, so are the films expected to present a very fair, objective picture of anything. There should be no distortion of facts or twisting of facts. We should not feed anything which creates disharmony, challenges our unity, challenges our integrity of the country. I think most of you are reading the newspapers daily. In the 2 days Times of India, on 7th page, there is a very prominent news. A laborer from 30 years old from Kerala who has come over to NCR, he was doing his job here. Few years back, he saw a half-porn movie twice, and that affected his psychological setup. And from 2012 onwards, he had been indulging into sexual assaults on young kids,
when he was caught red-handed and interrogated, he admitted having committed 30 such sexual assaults on young kids, and most of the kids he murdered. This is how such type of films which present a very negative aspect, how they psychologically affect raw minds. Similarly, we are a nation with a lot of people below poverty line, belonging to downtrodden sections of the society. In a democratic setup, they rather need to be awakened, enlightened, sensitized on relevant good issues which help them in earning good livelihood, in contributing towards development of the nation, in contributing towards harmony, peace of the nation. Very sorry to say, I will not name the film, you are well aware. There is a film being screened. Some of the states are offering no taxation and arranging special shows. Some of the states, on the other hand, have banned this film. Look at the scenario. What is it? How it is happening? Why such ideas should not be? Yes, there is a story, there is an incident. We need to be well informed, to be responsible citizens. But the presentation of films should be in a balanced way. What is good, what is bad, and what is the outcome? All these things are very, very important. You will, as filmmakers or joining media profession, will have a lot of such opportunities, chances when you are at the crossroads. There is a this way, there is a that way. When we guide our students, we help them with a lot of dialogue, discussion on all these relevant issues, so that they themselves decide how to navigate this difficult path. But those norms which are relevant for press, for media, to be objective, to be fair, to be independent and help in the democratic setup, same sets of principles are relevant for filmmaking. So this is what we want to convey and share with our students and students who have come from other colleges and universities. I wish and pray that when you join your profession, you will continue with this journey, with this thought process, with this guiding input in your mind, so that you bring pride to your professional career as well as you serve the society, serve the nation in best possible way. All the best. Thank you very much. Thank you, sir, for your inspiring words. We request you to please formally open the festival. I request all the guests to please join Vadhva sir on stage for the opening of the film festival. Yes, ma'am. So now we move on to the filmmaking spirit, which I see a lot of you are getting restless to get into. And here, yeah.
At the same time. Thank you, ma'am. I know, I know. To live a creative life, we must lose our fear of being wrong. The tagline, The Creative Kites, expresses the different approaches to life, film expression as an art form, a medium, and a tool of self expression while sharing energy and emotions. So, before we start to proceed with the screening of our films, we would now like to give a brief introduction of our esteemed judges. Yes, ma'am. तो इसको बंद कर दो। मैं कह रहा हूँ अभी चुपके से निकाल लकी सर को बोलो। क्या शेड्यूल है? फिल्म चलेगी अब कितनी देर तक? जितनी है सर मेरे ख्याल से नहीं सारी तो बहुत देर हो जाएगी ना, ऐसे तो 30-40 होंगे।
5 8 7 7 मिनट की मूवी है, बट कुछ बड़ी भी आई हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्रीज भी आई हैं 20 मिनट। तो लगा ले 5 मिनट की हुई तो 1 घंटे में 12 मिलती है। 3 घंटे तो उसके लिए चाहिए। तो ब्रेक नहीं मिला जाएगा, 4 बजे ज़्यादा का जाएगा। To live a creative life, we must lose our fear of being wrong. The tagline Creative Kites expresses the different approaches to life. Film expression as an art form, a medium and a tool of self expression while sharing energy and emotions. So, before we proceed with the screening of our films, we would like to give a brief introduction of our esteemed judges. Mr. Vijay S. Jodha is a writer, photographer, and a filmmaker based in Gurgaon. He has 5 books, and his films have been broadcast on 75 channels in 195 countries, including on BBC, CNN, and Discovery. His projects have received over 100 honors in 24 countries. In 2018, Mr. Jodha was given the honor of presenting a film and addressing delegates from 193 countries at the UNESCO headquarters in Paris on the occasion of the International Day of Persons with Disabilities. He trained 3 photographers for the International Olympics in France and was also given the honor of being appointed as one of the experts by the International Olympics Federation. His photographs are currently being exhibited in 2 group shows at Museum of Gloucester in England and at Domaine des Longchamps in Paris. Editor-in-Chief of India Africa Today, Mr. Rao Narendra Yadav, a relentless crusader towards minimizing the communication deficit and information gap among people. During the last 2 decades, as a media professional, academician, media trainer, and child rights expert, he has been exploring and experimenting with myriad forms of communication to facilitate sustained dialogue amongst various stakeholders and thereby bridging the information gap, particularly in the far-flung areas of India. As a storyteller in 2013, Mr. Yadav pioneered the popularization of issue-based cinema in India through the Woodpecker International Film Festival. Today, it is counted among the most respected and credible film festival across the globe. To further explore the power of communication in improving India-Africa relations, he established India-Africa Today in 2017 as a diverse platform to promote shared history and culture of India and Africa through cinema, art, food, and theatre. India-Africa Today is an attempt to bridge the gap of mutual distrust and develop better understanding and appreciation of each other's culture and tradition among Indians and Africans. He was conferred with the coveted Karamveer Puraskar 2019. This award has been instituted by the International Confederation of NGOs along with the United Nations. Mr. Vijay Lokpalli is a renowned sports journalist and author who began his career at the Patriot newspaper in 1981. He later wrote for The Hindu and Sports Star covering cricket matches in India and overseas from 1986. Mr. Lokpalli's passion for sports transformed into a successful career, and he has authored 5 books on cricket in India, including the Virendra Sehwag story, Driven, the Virat Kohli story, The Hitman, the Rohit Sharma story, Speed Merchants, the story of Indian pace bowling, and the World Cup Warriors, the Boys in Blue. His writing on cricket has earned him a reputation as one of India's most respected writers in the media, according to the print. Sportskira has also recognized Mr. Lokpalli as one of India's most well-known sports journalists.
May we have a huge round of applause for our esteemed judges. Now I request Bhavya Yadav and Nikhil Sharma, students of BA Journalism and Mass Communication, to take over the podium for our film screening. Good afternoon, everyone. Without waiting anymore, we will start with the film screenings. We will start with the documentaries first. Our first documentary is From Slum to School. The documentary highlights the plight of children living in the slum and how education is changing their lives. Okay. डोर्स बंद नहीं होनी चाहिए. हाँ क्यों नहीं होता मुझे दरवाजा बंद करके आओ. Is that a good place to view it from, Vijay sir? Is this a good answer? Yes, I really want you to see. Okay, lights 50 करिए. Lights 50. I think these lights should be. अच्छा बोल रहे हैं बोल रहे हैं. Good afternoon, everyone. Without waiting anymore, we will start with the film screenings. We will start with the documentaries first. Our first documentary is From Slum to School. The documentary highlights the plight of children living in the slum and how education is changing their lives. बैक की ऑन कीजिए आगे की. Education is often a luxury that many cannot afford. The story of the two sisters stands out as a beacon of hope. In India, illiteracy remains a significant challenge, particularly in rural and impoverished areas. Despite the country's efforts to improve access to education, a large number of children, especially those from marginalized communities, still do not have access to quality education. This is particularly true in slum areas, where access to basic amenities like water and sanitation is limited, and poverty is rampant. Children from these communities are often forced to work to support their families instead of attending school, perpetuating the cycle of poverty and illiteracy. However, there are individuals and organizations working tirelessly to address this issue and provide education to underprivileged children. The story of two sisters fighting illiteracy and providing free education for slum kids is a powerful example of this effort, and their work is making a significant impact on the lives of those they serve. मेरा नाम आंचल है. मैं BHW की पढ़ाई कर रही हूँ, सोशल वर्क की. मेरे घर में पापा, मम्मी, भाई और मेरी एक दी की शादी हो गई है. ये जो NGO आपने स्टार्ट किया, इसका क्या नाम है? पहले तो ये अक्षरालय. अक्षरालय एक नया प्रयास. बहुत अच्छे. तो ये जो अक्षरालय आपने स्टार्ट किया, तो इसका मतलब आइडिया कैसे आया? आप क्या करना चाहते थे? नहीं, ये जो बच्चे सब खेलते थे, जो स्कूल नहीं जा पाते थे, भटकते थे, उनको अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही थी,
हम बैठे थे ऐसे घर पे बात कर रहे थे अपने बहनों में। हमने गूगल पे बोला कि सर्च करके देखते हैं अगर कोई ऐसा इंसान हो जो हमारे संग फंडिंग करना चाहे, हमें मिले सर। उनने स्टार्ट की, उनको भी अच्छा लगा, वो आए यहाँ पे बच्चों के लिए बुक्स लाई, कॉपी लाई, ड्रेस लाई, सब कुछ पढ़ाई दिए और अच्छी शिक्षा मिली इनको। अब 5 तक हमारा स्कूल है ये। 5 के बाद 6ठी में जो बच्चे प्राइवेट के लायक उनको प्राइवेट में एडमिशन करवाना चाहते हैं, जो सरकारी के हिसाब से उनको सरकारी में एडमिशन करवाना चाहते हैं। जो आप पढ़ाई करवाते हो ये सब आप फ्री में ही कराते हो? इसके कोई पैसे नहीं, निःशुल्क एकदम? हाँ जी। स्टार्टिंग किया 1 जनवरी से, तो स्टार्टिंग किया, फिर सर ने भी बहुत अच्छा इसमें सहयोग दिया, बुक्स लाए और बाहर से टीचर भी आती थी हफ्ते में पढ़ाने बच्चे को। जो बच्चे अच्छे से पढ़ लिए उनके स्कूल में भी एडमिशन करवा रहे। ये सब ये जगह आपकी है या सर की है? नहीं, ये जगह हमारी है। और आपके पापा क्या करते हैं? मम्मी तो हाउस वाइफ होंगी, पापा ड्राइवर है। अच्छा, ड्राइवर। आप जो यहाँ बच्चे पढ़ाते हैं तो इनका क्या रिस्पॉन्स आता है? मतलब इनको पसंद आ रही है पढ़ाई, ये सब चेक करते रहते हो? हाँ, पेपर लेते हैं, प्रॉपर टेस्ट होता है, हर चीज होता है। क्या आपको क्या दिक्कतें आई जब आप इस एनजीओ को शुरू कर रहे थे? झगड़ा हर जगह होता है, वो कुछ स्टार्ट करने से अगल बगल वाले बहुत दिक्कत आई। हमने बोला चालू करना है तो करना। कुछ आखिरी वर्ड आप कहना चाहोगे इस डॉक्यूमेंट्री के द्वारा? कुछ मैसेज आप सरकार को सेंड करना चाहोगे या फिर किन लोगों को जो देख रहे हैं इस डॉक्यूमेंट्री को कि सपोर्ट करें हमारे एनजीओ को, कम से कम जो हमारा एनजीओ और आगे बढ़ सके और कुछ नहीं। और कितनी आपका जो सपना है, आपने मुझे बताया अभी कैमरा के पीछे कि आपका सपना है कि कंप्यूटर्स, अगर आपको सही फंडिंग मिले और सही सपोर्ट मिले तो आप मतलब इतनी सारी फैसिलिटीज़ इनको दिलाना चाहते हैं, तो उसमें क्या क्या चाहते हैं? यहाँ कंप्यूटर है, अच्छी इनको इंग्लिश पढ़ाने वाले टीचर आए, अच्छी हर चीज़, प्ले दे, डांस दे, हर चीज़ का। Anchal and Pooja's efforts to fight illiteracy and provide education to underprivileged children in India are nothing short of heroic. Their dedication, passion, and selflessness have transformed the lives of countless individuals and families in their community. However, their work is far from over. There are still millions of children in India who lack access to quality education, and it is only through the tireless efforts of individuals like Anchal and Pooja that we can hope to build a more educated and equitable society. So, let us stand behind these two remarkable sisters and support them in their mission to bring education to every household in India. Together, we can make a real difference and build a brighter future. So moving on to our next documentary, we have Bhav Anubhav. The documentary talks about the relationship between the expression and the audience, that is Bhav Ras in the Natya Shastra. यथो हस्ता तथो दृष्टि, यथो दृष्टि तथो मनः, यथो मनः तथो भाव, यथो भाव तथो रस. Where the hand goes, the eyes follow. Where the eyes go, the mind follows. Where the mind goes, the expression follows. And where the expression goes, the audience accepts and reacts to the message. This relationship in Natya Shastra is known by Bhava Anubhava, wherein Bhava means to emote while portraying and becoming a character, and Anubhava means the spectator is understanding and reacting to the expression emoted
and finally experiencing rasa. There are mainly 9 rasas in performing arts, which are collectively known as Navarasa. Shringar, love, hasya, humor, karuna, sadness, Rodra, anger, Veera, pride, Bhayanaka, fear, Bibhatsa, disgust, Adbhuta, wonder, Shanta, peace. People sometimes interchangeably use Abhinaya and Bhava. However, there is a slight difference as Bhava means to express facially and Abhinaya means to express facially along with hand gestures. The previous shlok puts forth the idea that dance is one of the most effective and immersive form of communication and mostly non-verbal. Non-verbal because most of the times words are not required to express, but the expressions are enough. Music is just an aid for dancers and not a necessity. If we add music to these clips, it would be like मैं तो खड़ी थी आस लगाए मैं तो खड़ी थी आस लगाए. Dance in its totality is basically divided into 3 parts. Nritta, here footwork is given prominence and it does not stress on bhava. Nritya, it consists of footwork as well as abhinaya. And Natya, it means drama and it consists of pure bhava and abhinaya. Dancers, especially mono artists, use their own physicality, spirituality and their own emotions to show and convey to the non-dancers and those in the audience how to feel and express and what it is like to be a human with emotions and to be in sync with one's own body. Dance is therefore a communication where the dancer's experience becomes that of the spectators. In fact, the audience become a part of the performance. Unlike films, dance provides a space to celebrate creativity and engage with audience at a personal level. The artists communicate with an audience coming from various regions, and the only language they use is dance. സുന്ദരി കണ്ണാൽ ഒരു സേതി സൊല്ലടി ഇന്നാൾ നല്ല തേതി सुहाग रात है घूंघट उठा रहा हूँ मैं जन्मों धन्यवाद जे रावी विच पानी कोई नहीं ते अपनी कहानी कोई नहीं जसंत जवासिनी देव सुपूजित सद्गुणवर्षिणि शान्तियुते সন্ধ্যারু মেঘমালা তুমি আমারো সাধেরো সাধু ఎక్కు పెట్టి మెళ్ళో తాళి కట్టి మరలా రాముడవ్వనా सुन्दरी सिन्दूर देगे गीत कर रामिया Now moving on to the next documentary. Sa Journey of Chai. The documentary deals the cultural heritage of India that binds the country and travels to the tea gardens of the country and showcases the process of tea production.
India, a land of culture, heritage, diversity, democracy, and people. Its history is as old as time. From the revolution of 1857 to the greatest partition in the human history, India has seen it all. It struggled for more than 200 years in the shackles of British Raj only to break free and get divided into two. Breaking free and founding the new independence, India grew from nothing to achieving everything. In its 75 years of independence, it has seen it all. From ups and downs, be it the war for its identity or the war during COVID, it grew from every setback into a glorious nation, and much better than what it was 75 years ago. India is a place rich in culture, heritage, diversity, religion, sports, festival, food, and whatnot. Food is the love language of India, be it Chinese, Thai, Japanese, Korean, Nepali, Bhutanese, Mexican, Italian, Vietnamese, Indian, and many more types of cuisines are widespread across India. Just like Romeo and Juliet, Heer and Ranjha, Salim and Anarkali, our food is incomplete without a companion. Be it a soft drink or in India, our beloved chai. The morning of every house in India starts with tea, and this tea tells a new story every day. Chai, sa, cha, sai. There are so many words for tea. There are so many ways to make tea, like black, milk, Kashmiri, masala, Suleimani, and whatnot. But the emotions behind the words are the same. The main ingredient is the same: tea leaves. Chai, being the most drinkable among more than 64% of Indians, the production of tea amounts to over 1.2 billion kilograms per year. चाय जोड़ती है, चाय तोड़ती है, चाय दिलों को मिलाने का काम करती है, चाय का चर्चा होती है, चाय पर परिचर्चा होती है, चाय पे लोगों का गुस्सा भूल जाता है शरबत की तरह। चाय मिलाने का काम करती है। चाय के बहाने से पुराने दोस्तों के साथ मिलकर गपशप होना, गाली गलौज करके जो प्यार मोहब्बत का इजहार होता है, वो सिर्फ चाय पे हो सकता है और कहीं वो संभव नहीं है। और चाय किफ़ायती भी है, विद्यार्थी और टीचर के लिए तो और भी ज़्यादा किफ़ायती होती है, क्योंकि विद्यार्थी हर कोई गरीब ही होता है। मम्मी पापा उसको पॉकेट खर्च के लिए बहुत कम पैसा देते हैं, क्योंकि मम्मी पापा भी कभी ना कभी विद्यार्थी रहे होते हैं, तो उनको पता बच्चों को अगर पैसा दिया तो क्या करेगा ज़्यादा। तो इसलिए बच्चा चाय पीने के लिए टी स्टॉल पे या कहीं पे भी जाएगा तो चाय पिएगा और चार दोस्तों को पिला भी सकता है। इसलिए चाय सबसे जोड़ने का काम, समाज में अगर कोई काम चीज कर रही है तो चाय कर। The journey of patience and love of tea that is delivered to our doorsteps starts from Assam, where along with beautiful culture of gifting gamucha, celebrating Bihu, wearing Mekhela Chadar, being part of Satriya Nritya, people are so welcoming and beautiful. मैं तो हूँ ही दार्जिलिंग से। दार्जिलिंग का जो टी लीफ है वो तो वर्ल्ड फेमस है। तो दार्जिलिंग का जो टी लीफ है वो ब्रिटिश के टाइम में 19th सेंचुरी 18 समथिंग में ब्रिटिश लोगों ने चाइना से लाके वहाँ पर टी लीव्स प्लांट किया था, टी प्लांट्स। तो वो एकदम पूरा वर्ल्ड फेमस है दार्जिलिंग टी बोलने से। मैंने इंग्लैंड में तो बहुत ही चलता है, यूके में बहुत ही चलता है। तो हम लोगों के लिए क्या है कि हमारा सारा दिन वो दार्जिलिंग टी पी पी के ही चलता है। तो सवेरे उठते उठते फिर एक गिलास पी लिया चाय, और चाय मैंने विदाउट शुगर एंड विदाउट मिल्क अच्छा लगता है। उसमें फ्लेवर ज़्यादा होता है, गोल्डन कलर का फ्लेवर होता है, लिकर का होता है, पर मैंने ऐसा लगता है ना जैसे इफ एज द सैंड पेन। चाय पीने के बाद एकदम शरीर में गर्मी हो जाती है, जैसे आप
चाय नहीं शैम्पेन पी रहे हैं, तो दार्जिलिंग का टी का वो है। तो दार्जिलिंग में क्या है कि लोग पानी कम पीते हैं, चाय ज़्यादा पीते हैं, वही दार्जिलिंग टी। तो हमारे जीवन में तो मैंने वो चाय का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। मैंने सारा दिन चाय पीते पीते ही कर जाता है। ब्रांची, अगर चाय सुन के आपको सबसे पहले वर्ड जो चाय से रिलेटेड क्या आता है? चाय सुन के उमंग एकदम क्या बोलता है उसको, फ्रेशनेस, जैसे हमारा सब पूरा एनर्जी आ जाता है उसको पीने के बाद। मैं सवेरे उठ कर पीने से एकदम पूरा नींद चला जाता है, फिर जब शाम को पीते हैं तो पूरा मैंने थकान चला जाता है, तो पूरा सच पूछा जाए तो मेरी लाइफ में चाय की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। अगर चाय ना हो तो मेरा दिन शुरू नहीं होता है, और चाय के कारण ही मैं रात को देर रात तक जब पढ़ाई करती थी, स्टडी कर पाती थी। आज लिखती हूँ तो मैं चाय के सहारे ही लिख पाती हूँ। चाय तो मेरी लाइफ का एक लाइफ ऑफ पार्ट आप बोल सकते हैं। खाना नहीं हो तो चलेगा, लेकिन चाय जरूर है। और सबसे पहले चाय सुनकर आपके दिमाग में कौन सा शब्द सबसे पहले आता है? चाय सब सुनते ही मेरे दिमाग में मेरा जो घर है अपना आसाम मुझे याद आता है, क्योंकि आसाम में ही मैं अपनी स्टूडेंट लाइफ मैंने बिताई है। वहीं मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है आसाम, और चाय सुनते ही बस आसाम की हर चीज़ मेरी याद मेरी ताज़ा हो जाती है, अच्छा लगता है। Assam. Not just a place filled with beautiful sceneries and locations, but a place filled with beautiful people. Apart from its famous tea gardens and estates, Assam is also famous for Kaziranga, Assam silk, Bhoot Jolokia, also known as ghost chilies, one of the hottest chilies in the world, Brahmaputra, one-horned rhinos, and whatnot. Music, festivals, crafts are some of the most underrated, yet some of the most soul-soothing specialities of Assam. Majoli, an island in Assam, is one of the first islands to be converted into a district. This is the beauty of Assam. के तो के बांध दे लाई लुकी दे लुकी खोपाई रे, के तो के बांध दे लाई लुकी दे लुकी खोपाई रे, के तो के नजरी लगा, के तो के नजरी लगा, हे वृंदावन हो हर गुस्सा के तो के नजरी लगा, हे वृंदावन रसो গৰমটো লাগে আৰু গৰম দিনতো গৰমটো লাগিবই, মেনেজটো কৰিবই লাগিব। এনে আমি এনেকৈ ঝাপি লৈ পেলাই আৰু পাত ছিঙিও আৰু ৰ'দতে ঝাপিটো ল'বই লাগিব। ৰ'দ দিলেও ঝাপি ল'ব লাগিব, বৰষুণ দিলেও ল'ব লাগিব ঝাপি। 7টা বজাত কামত আহোঁ, তাৰপিছত 9টা বজাত তাত লৈ পেলাই আকৌ পাত ছিঙি পেলাই আকৌ 10টা বজাত তাত লয়, তাৰপিছত 1টা বজাত ছুটি হয়, আকৌ গধূলি ছুটি হয় 4টা বজাত। 8 ঘণ্টা। ট্ৰেক্টৰ 9টাত আহে, এবাৰ পানী খুৱাব, তাৰপিছত পাত ল'বলৈ আহে 11টাত আৰু 4টাত আহে। আপোনালোকৰ ঘৰৰ কিমান মানুহে ইয়াত কাম কৰি আছে? 2জন। ওকে, 2জনে কাম কৰি আছে। ওকে, তো আপোনালোকে দিনটোত কিমান কিলো চাহ হেৰি কৰে? 24 কিলো। তাৰপিছত কাম আৰু বাগানত কাম সেইকেইটা পাত ছিঙা শেষ হ'লে কলম কাটিব দিয়ে, গছ বাচিব দিয়ে, গছ বচা হ'লে তাৰপাছত আকৌ এনেকৈ নলাকেইটা চফা কৰিব দিয়ে, তাৰপাছত যিখিনি এইকেইটা গছৰ গলিকেইটা সেইকেইটা চাফ চিকুণ কৰিব দিয়ে।
It is estimated that around 7 million plantation workers are involved in the production of tea all over the country. The plantation workers are the backbone of tea estates. It's because of their hard work and efforts we get the best product. They are the people who are actually on ground and work day in and day out, not just to provide us with chai, but to make a living for their family. There are some plantation workers' families who have been working for generations after generation. They work for hours at end to get paid only a handful for the tea plucking. They are the real heroes behind our beloved chai. The process of growing a tea plant works in a loop. As to get a new tea plant, we have to first begin with one in front of us. It is that old bushy tea plant that gives us a new and fresh plant every time. The process of that part is quite interesting and can usually take up to 3 to 4 months to develop a good yielding tea sapling. আমাৰ তেখেতটো এতিয়া শ্লিপৰ ভৰাই থোৱা আছে শ্লিপ ভৰাই থোৱা আছে আমি কেনেকৈ কাটিংছ কৰি দেখাই দিম এইটো কাটিংছ তাতে কটা হৈছে কাটিংছ কটা হৈছে কাটিংছ কাটি কৰি কাটিংছ কটা হৈ গ'ল তাৰপিছত কাটিংছৰ লগতে ৰুটেক্স লগোৱা হয় ৰুটেক্স লগাই কৰি কাটিংছটো লগোৱা হয় কাটিংছটো লগোৱা হয় এই ধৰণে ইয়াত কি সাৰ দিয়ে থাকে ইয়াত আমাৰ এই মাটিটো অকল মাটি থাকে আৰু গোবৰ থাকে বাকী একো মিক্স নকৰোঁ তাৰপিছত 3 মাহৰ পিছত ইয়াৰ পৰা আকৌ গজালি বা আকৌ গজালি উঠি আহে ওপৰলৈ তাৰপিছত ইয়াৰ এইবোৰ আগত লগাওঁ আমাৰ ইয়াৰ পিছত মানুহ প্ৰাকাৰবিলাকে ৰাতিপুৱা 7:30 আহে 7:30 আহি কৰি প্ৰথমে পাত ছিঙাৰ পিছত মানে প্ৰথমে চৰ্দাৰ থাকে চৰ্দাৰে আহি কৰি সিহঁতে লাইন বাই মহিলাবিলাকক এটা বা দুটা কৰি পাহি দি দিয়ে সিহঁতে তাৰপিছত সিহঁতৰ যিটো নেকি নিৰিখ আছে সেই অনুযায়ী পুলিবিলাক যেনেকৈ পাত ছিঙিব লাগে সেই পাতবোৰ কোৱালিটি ৱাইজত ছিঙে সিহঁতে এইবোৰ কোৱালিটি ৱাইজত পাতবোৰ ছিঙে যিটো কোৱালিটি দৰকাৰ আমাৰ 3 খিলা পাত দৰকাৰ আমাৰ এই 3 খিলা পাত ছিঙে সিহঁতে ছিঙাৰ পিছত 9:30 9:30 ভিতৰত পানী গাড়ী পানী খায় পানী খোৱাৰ পিছত আকৌ মানে আমাৰ নিয়ম এটা আছে আমাৰ ইয়াত 9টা বজাত পাত ওজন এবাৰ কৰে আজি নাই কৰা 9টা বজাত পাত ওজন কৰে তাৰপিছত আকৌ 11:30 পাত ওজন কৰে 11:30 পাত ওজন কৰাৰ মহিলাবিলাকৰ যিটো ওজন হয় প্ৰতিজনৰ মানে হাজিৰা অনুপাতে 24 কেজি গোটেই দিনটো ভিতৰত হ'ব লাগে ৰাতিপুৱা 7:30 পৰা গধূলি 4টালৈকে 24 কেজি পাত ওজন 24 কেজি যদি ওপৰত পায় তো তাৰ এইটো এক্সট্ৰা পায় সিহঁতে সেইটো ঠিকা পায় আৰু 24 কেজিলৈকে 232 টকা থাকে তাৰ হাজিৰা তাৰপিছত পাত ওজন হৈ যোৱাৰ পিছত দুপৰীয়া পাত ওজন হৈ যোৱাৰ পিছত সিহঁতে খানা পিনা খাই আকৌ 1টা বজাৰ পিছত আকৌ পাহিত সোমাই যায় তাৰপিছত আকৌ 4টা বজাত পাত ছিঙে 4টালৈকে পাত ছিঙালে সেইটো ওজন এক্সট্ৰা হয় 3টামান ওজন আমাৰ ইয়াত ওজন হয় তাৰপিছত পাতবোৰ ইয়াৰ পৰা গাড়ীত তেনেকৈ আপোনাৰ দেখিলে নিজায় গাড়ীত আপোনাৰ পাতবোৰ ওজন কৰে ইয়াৰ পৰা ডাইৰেক্টলি ফেক্টৰীলৈ যায়
ফেক্টৰী কৰি তাত আপোনাৰ বেল্টত পাতত পেলাই জেগা থ'বলগীয়া জেগা আছে আপোনাৰ ড্ৰাপত থৈ দিয়ে। ড্ৰাপত থোৱাৰ পাছত পাতবোৰ ৱেডাৰিং কৰাৰ পাছত সেই পাতটোকে তাত টেম্পাৰেচাৰ দি চাই লয় কিমানটো ৱেডাৰিং হৈছে। তাৰপিছত CTC পঠিয়ায় বেল্টৰ যোগেদি। CTC কাৰণে বেলেগ বেলেগ বিভাগ আছে, তাত গ'লে হ'ব সেইটোৱে গম পাম। Life is never singular, rather a journey about continuous changes. Take it from the life cycle of a butterfly. It was not always as beautiful and magnificent. It went through changes, it went through different stages of transformation to become a vibrant and attractive creature. These changes and transformations are not limited to plucking, harvesting, collecting, but just a start. It enters in a new dimension when these chai leaves reaches the factory and the magic happens. जो पत्ता जो प्लांटिंग जो होता है ना गार्डन से, उस पर वो टेलर पे आके ये हमारा जो ट्राफिंग है वेडरिंग इधर में उसको लेके स्प्रेडिंग करता है। स्प्रेडिंग के बाद उसको मॉइस्चर रिड्यूस करके आपका 68-69% जब मॉइस्चर रिड्यूस हो जाता है, उसके बाद हम प्रोसेसिंग के लिए ये मैनुअल में रख के उसको हम मशीन के थ्रू मशीन में ले जाता है। उसके बाद वो प्रोसेसिंग आरम्भ होता है। तो प्रोसेसिंग के लिए दूसरा रोटर वैन है, वो CTC है, वो अंदर है। ये पत्ता है ना, ये पत्ता जो मॉइस्चर जब रिड्यूस हो जाता है अप टू 79, 60, 69, उसके बाद उसको बैग में डाल के इस पर लगा के ये चला के वो अंदर ले जाता है। उसके बाद वो दूसरा प्रोसेस होता है। फार्मेटिंग रूम है, फार्मेटिंग रूम है, इसको प्रो फार्मेटिंग बोलते हैं। ये फार्मेटिंग अभी तो पता नहीं है, अभी जो सीजन ऑफ हो गया, इसलिए फार्मेटेशन ये प्रो फार्मेटेशन होता है। इस पर आप जो ह्यूमिडिटी है उसके मैच होके एक घंटा 20-30 में इसको पत्ता यहाँ पर रख के उसके बाद वो ड्राइंग में ले जाता है। ये हमारा जो मशीन है वो ट्रॉली है, ट्रॉली में भर के उसे ले जाता है। ये हमारा CTC मशीन है। CTC मशीन में वो मॉडल में जो वेडरिंग पत्ता आता है उसको इस पर डाल के CTC में वो कोड कट में उसको प्रोसेसिंग करके उस शेप में ले जाते हैं। और उसको पानी में जाकर फिर जो ये ड्राई है, फार्मेटेशन जो हुआ था ना उसको सेकंड पे जो कंटेनर पे ड्राई में डाल के उसको ड्राइंग करता है, फाइन और फिर इसको रख के करने के बाद ये डायरेक्ट शॉर्टिंग में जाता है। ये हमारा फिनिश प्रोडक्ट है। ये जो फिनिश प्रोडक्ट है इसको हमें पैकिंग हो रहा है, इसमें पैकिंग में डाल के अभी वो सैम्पलिंग करके उसको हम सेल करते हैं। तो दुकान को जैसे उसका रेट, उसका जो क्वालिटी है वो क्वालिटी लिखा टेस्ट करके
क्वालिटी के अंदर कितना प्राइस मिलेगा वो सब में डीलिंग होगी तो हम सेल करते हैं डायरेक्ट। तो ड्राई माउथ के बाद शॉर्टिंग करने के बाद ये SM ग्रेड है, ये BP है, ये OF, ये PF है और ये डास्ट और ये CD है। उसी डास्ट होता है हमें, डास्ट के बाद ये CD है और 60 ग्रेड है यहाँ पर। With the proper care and nourishing, the tea leaves are grown, harvested, and then it is sent to the factories for the further step where these leaves are dried, processed, shaped, and then packed to sent out. To make different types of tea, per se black, green, white, yellow, etc., the tea leaves are processed differently. All these stages of the leaves becoming chai patti are processed chemical free. The tea leaves manufactured in the factory are packed in bulk and are the main supply for the big tea companies. Chai is the love language of people in India. The chai we get, the chai we buy, the chai we drink comes from the land of red rivers and blue hills, Assam. And every person has their own way to express their love. Wow, such an aesthetically pleasing it was. Now moving on to our next documentary, we have The Art of String. The documentary, while giving a spiritual dimension, dwells deep in the cultural heritage of handloom, weaving in the form of saris. Varanasi, the holy city on the banks of river Ganges, known for the rich culture and traditions, is one of the oldest living cities in the world. The morning of the city starts with the Ganga Aarti on the ghats early morning. The city flaunts a total of 88 ghats, and on every ghat you'll see people taking a dip in the holy river. Morning Aarti acts as a source of positivity and blessing for the attendees. Ganga Aarti is followed by Subhae Banaras, which consists of classical music programs, yoga, and peaceful view of rising sun from the horizon of Ganga. Subhae Banaras is one of the main attractions of this holy city. The day starts with the famous breakfast of the city, the very simple kachori sabji, jalebi and chai. The narrow streets are full of life and spiritual energy. The streets of the city are famous in themselves only, but the alleyway of the city has some historical, traditional art of hands and strings attached to which is Banarsi sari. The handloom practice of people from this city has its roots back to the 16th century. Rich embroidery, great zari work, very thin and meticulously designed handwork is what Banarsi sari is famous for. Banarsi sari are made with hands and machines
Hand making practice requires more effort, concentration, and hard work. Every pattern, every design has to be made and stitched by the hands only. The borders of the sari are the most difficult to do. Every time they have to put in thread from both the sides and then move their wooden made machine by hands. The room is filled with web of silk and threads with a bunch of jacquard cards, which is used to draw patterns. Weaving room is planfully constructed and a handmade machine is set up with a bulb hanging from above where weaving is done. Before starting the work, they sprinkle the water through their mouth on the threads to make them evenly soft, which reduces the risk of odd possibilities in stitching work. The machine is operated by my leg. Looking down, you will see when I press my leg on the paddle, it will pull out the thread, and then with the help of my hand, I will bring this part towards me and one part is done. It's time taking. One sari takes 15 days to get completed if worked for 8 to 10 hours daily. The jacquard card is used to draw the patterns and design on the saris. They are crafted in the same design through which thread is designed in certain pattern. The more the different colors are involved in the process, the more time it requires to prepare a sari. The equipment which is used to pull the thin thread has to get passed each time through the sides. The most expensive Banarsi saris depends upon the work it has. If you go for more zari or golden work with thin artworks, then it will be very much expensive. You will get the best quality of hands weaved saris only than machine. Machine will do things fast, but with hands, work will be fine, neat and clean. We get contracts from wholesalers and deliver at the month end. Now we are not the profit makers. We work for someone else indirectly. The other part of this wonderful hand looming sector is weaving from machines. Producing output is same, but the procedure and time taken is completely different. The art of strings is wonderfully formulated through machines. This is the power room where saris are being weaved. Working for 10 to 12 hours daily on machine, then we can create a sari. And if there are more work involved, then time taken can be more. Here also the jacquard card is used to set a design pattern, and the thread is pulled up from the holes and then the card gets rolled up. And with every single thread, the art of weaving is done.
Silk used in the sari is extremely soft and requires utmost care and attention in the production process. Designs are breathtaking and the process is laborsome. Earlier, it was easy for us to go and sell our saris in the market, but with changing time and rules and regulations also changed. Now, if we go to market, they ask for documents, GST papers, and etc. Earlier, we used to make saris and sell it and earn profit of 200 to 400 daily. But now, it's hard for us to earn, and our living through weaving profession is getting tough day by day. Low grid supply and frequent power cuts are a serious matter of concern for the weavers. Old workshops lack brighter rooms, primarily due to absence of windows. Work atmosphere for these workers is far from being convenient. Abysmally ventilated construction coupled with darkness make the surroundings suffocating. But the work never stops, and this atmosphere soon becomes normal for the workers with the passing time. We work for someone else. We are not the deciding factor for the prices of the saris in the market. We get our wages as a worker and our duty stops there only. Now it's up to them on what prices they are selling in the market. Electricity is not there. What can we do now? See the saris like this only. After the whole process, saris gets folded up and stacked and then sent to the final polishing and touch up to the outside market. If you will wait for the power to resume the work, then this kills the working hours. Moving on to the next documentary for today, Dev Sanchay. The documentary showcases the rich cultural and traditional heritage of Kullu ka Dashera. भारत संस्कृति और सभ्यताओं से संपन्न एक देश, जहां हर गांव, हर जिले की अपनी एक अलग मान्यता है और उन मान्यताओं से जुड़े हैं सैकड़ों लोगों के विश्वास। ऐसी ही आस्था का केंद्र है हिमाचल प्रदेश का एक शहर कुल्लू। ब्यास नदी के तट पर बसा ये शहर वैसे तो अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है, जो कि
पूरे साल पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बना रहता है। कुल्लू जितना अनोखा शहर है, उतनी ही अनोखी है यहाँ की संस्कृति। यहाँ पर रहने वाले लोगों की परंपरा और मान्यताएं पूरे देश से अलग है। इन्हीं मान्यताओं की कुछ झलक देखने को मिलती है कुल्लू के दशहरे में। कुल्लू का दशहरा पूरे देश से अलग और अनोखा है। जहां पूरे भारत में विजयादशमी समापन की ओर होता है, वहीं कुल्लू घाटी में इस उत्सव का रंग और भी बढ़ जाता है। यहाँ जिले के कई गांव से लोग अपने अपने देवी देवताओं को पद यात्रा करके लाते हैं। हम कम से कम 1 महीना पहले तैयारी में होता है। पहले घर का काम निपटाना पड़ता है ताकि घर में कोई काम शेष ना बचे, और साथ में जो है देवता जी का कोई साज बाज में किसी प्रकार की कमी ना हो, या कोई भी कमी हो तो उसको हम पूरा करते हैं, साथ साथ पूरी करते हैं। और उसके बाद जो है फिर हम 1 दिन पहले जो है घर से प्रस्थान करते हैं, पैदल आते हैं, 70 किलोमीटर दूरी से पैदल पहुंचते हैं, और फिर इस महाकुंभ में जो है हम प्रवेश हो जाते हैं। देवी देवताओं की मूर्तियां बहुत ही आकर्षक पालकी में सुंदर ढंग से सजी होती है। वाहन जत्री विभिन्न वाद्य यंत्र बजाते हुए अपने देवता के आने की सूचना देते हैं। कुल्लू का जो दशहरा है वो बाकी जगह पे पूरे देश भर में जो दशहरा मनाया जाता है उससे बहुत डिफरेंट है, इन सेंस कि विजयदशमी के दिन यूजुअली सब जगह दशहरा फेस्टिवल इस तरीके से मनाया जाता है कि रावण के पुतलों को जलाया जाता है और इट्स अ वन डे अफेयर। बट यहाँ पे जो दशहरा है वो उस दिन से शुरुआत होती है, उसकी विजयदशमी के दिन ये दशहरा शुरू होता है और 1 हफ्ता तक जो है उसके बाद दशहरा का फेस्टिवल चलता है, जिसमें यहाँ के जो मुख्य अधिष्ठाता हैं जिनकी आपने बात करी, भगवान रघुनाथ जी, उनको उनके दर्शन के लिए और उनको टू पे ओबेसेंस टू हिम पूरी वैली के लगभग 332 के आसपास हमारे देवी देवता हैं जो यहाँ पे आते हैं। फिर उन सबकी जगह जो है यहाँ इस ढालपुर मैदान में पहले से निर्धारित है, वो अपनी अपनी जगह पे आकर 1 सप्ताह तक यहाँ पे कैंप करके रखते हैं। प्रशासन की ओर से इन सभी देवी देवताओं के लिए टेंट्स की व्यवस्था जो है वो प्रशासन की ओर से की जाती है, चाहे वो एक टेंट में वो देवता को रखते हैं, उसके अलावा जो उनके साथ लोग आते हैं जो वाद्य यंत्र प्ले करते हैं जिनको भजंत्री बोलते हैं, या देवलू जो उनके फॉलोअर्स उनके साथ आते हैं, तो उन सब के लिए रहने की व्यवस्था, टेंट्स की व्यवस्था हम लोग करते हैं। बिजली पानी की व्यवस्था प्रशासन के द्वारा की जाती है और सस्ती दरों पे उनको लकड़ी या केरोसिन भी अगर उनको ज़रूरत पड़ती है तो वो भी प्रशासन की तरफ से दिया जाता है। उसके अलावा इस पूरे इवेंट के दौरान सुरक्षा व्यवस्था या ऑन डेली बेसिस इन देवी देवताओं के साथ आए हुए लोगों को कोई भी समस्याएं आती है तो वो सारी व्यवस्था जो है प्रशासन द्वारा देखी जाती है। कहा जाता है कि इस मेले में भाग लेने के लिए देवलोक से भी देवी देवता पृथ्वी पर आते हैं। यहाँ जिले के लगभग सारे देवी देवता दशहरे की देवी तथा राज परिवार की दादी कही जाने वाली हिडिंबा देवी, बिजली महादेव आदि ब्रह्मा के अलावा और भी कई देवी देवता मौजूद होते हैं, जिनका आशीर्वाद लेकर लोग सुख और समृद्धि की कामना करते हैं। जो नवरात्रा होता है उस दिन आदि ब्रह्मा जी अपने मडार से निकलते हैं और उसी दिन रात को अपने शिविर में कुल्लू में पहुंचते हैं और अगले दिन सुबह सबसे पहले ब्रह्मा जी की यहाँ से जलेब जाएगी, तो रघुनाथ जी के पास जाएंगे, हाजिरी देंगे। उसके बाद राज दरबार में हाजिरी देंगे, जहाँ की हमारे 18 करोड़ का जो माना जाता है जो निशान होता है वहाँ पे हाजिरी देंगे। उसके बाद वापस आएंगे अपने शिविर को। इस मेले की शुरुआत होती है सुल्तानपुर में स्थित रघुनाथ जी के मंदिर से। मंदिर में रघुनाथ जी का स्नान और श्रृंगार किया जाता है। इसके उपरांत भगवान रघुनाथ जी को पालकी में रथ मैदान लाया जाता है, जिसके बाद
यहाँ देव परंपरा का निर्वहन करते हुए रथ यात्रा की शुरुआत होती है। लकड़ी से बने आकर्षक और फूलों से सजे रथ को रस्से से खींचा जाता है। रथ यात्रा के दौरान रथ में लगे रस्सों को खींचना अत्यंत शुभ माना जाता है। इसी वजह से रथ को खींचने के लिए लोगों में होड़ लगी रहती है। रथ के साथ साथ क्षेत्र के अन्य देवी देवताओं की पालकियां भी चलती हैं। कहा जाता है कि कुल्लू दशहरे का संबंध रामायण से नहीं बल्कि एक राजा से जुड़ा है। यहाँ 1637 से लेकर 1662 तक राजा जगत सिंह का शासन था। उनके 1648-49 के बीच में ऐसा हुआ कि उन्हें ब्रह्म हत्या का शाप लगा, जिसके कारण कि उन्हें एक तो जो पानी पीने लगे वो खून की तरह दिखाई देने लगा, और जो भोजन करने लगे तो छोटे छोटे कीट दिखाई देने लगे, और साथ ही कुष्ठ रोग हो। फिर प्रजा में किसी ने कहा कि महाराज आप दूसरे सिद्ध पुरुष के पास जाएंगे तो ठीक हो जाएगा। फिर उन्होंने उनको गए तो अभी उनके पांव छुए तो फिर उन्होंने कहा कि बहुत कठिन है, कर पाओगे? कहा क्या? कहा जो अयोध्या में मंदिर है त्रेतानाथ ठाकुर का, जिससे अश्वमेध यज्ञ किया था, वह दिव्य मूर्ति वह अयोध्या में है, और उस मंदिर का नाम है त्रेतानाथ का ठाकुर। और वो मूर्ति है, तुम दिव्य मूर्ति है यहां लाओ, और फिर राजपाट उनको छोड़ो और खुद आप चौकीदार बन के ऑन बिहाफ ऑफ दोज आइडल्स आप राजपाट चलाओ। उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए आज भी भगवान रघुनाथ के खरीदार के रूप में परंपरा निभाई जाती है। भगवान रघुनाथ के रथ को रथ मैदान से खींचते हुए करीब 500 मीटर दूर ढालपुर मैदान में बने उनके शिविर तक लाया जाता है, जहां ये रथ अगले 6 दिनों तक ठहरता है। अगले 7 दिनों तक कुल्लू वाद्य यंत्रों की मधुर ध्वनि से गूंजता रहता है। वाद्य यंत्रों की मधुर स्वर लहरियों से वातावरण देवमय सा हो जाता है। भगवान रघुनाथ जी के शिविर में देवी देवता तथा श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है, जो कि अपने में अतिष्ठता के दरबार में हाजिर लगाने आते हैं। शिविर में सबसे मनमोहक दृश्य होता है भगवान रघुनाथ जी की आरती व सुंदरकांड। रघुनाथ जी रोज सीता माता के साथ सज धज कर अपने सिंहासन पर विराजमान होते हैं। हर रोज भगवान रघुनाथ का श्रृंगार सुंदर वस्त्रों और कीमती आभूषणों से किया जाता है। रघुनाथ जी की अंगुष्ठ मात्र प्रतिमा का रोज शाही स्नान होता है। भगवान रघुनाथ जी के भक्ति में लीन श्रद्धालु नाचते गाते रहते हैं। दशहरा उत्सव के दूसरे दिन से राज परिवार से संबंध रखने वाले भगवान रघुनाथ के प्रमुख खरीदार राजा पालकी में सवार होकर परिक्रमा पर निकलते हैं, जिसे जलेब कहा जाता है। रघुनाथ के खरीदार की पालकी देवताओं के बीच रहती है, जिसमें खरीदार राजा राजसी पोशाक में जलेब की शोभा बढ़ाते हैं। इस जलेब में वाद्य यंत्रों की धुन पर आम जनता अपने शासक के सामने नाच गाकर अपना स्नेह दर्शाते हैं। राजा के चांदनी से चलकर ये जलेब ढालपुर मैदान के चारों ओर से होती हुई पुनः राजा की चांदनी के पास समाप्त हो जाती है।
मेले के मनमोहक दृश्यों में से एक होता है महानाटी। इन 7 दिनों के दौरान एक दिन महानाटी का आयोजन होता है। महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा में सज धज कर वाद्य यंत्रों की धुन पर कदम से कदम मिलाकर नाचती हैं। वर्ष 2015 में लगभग 9,900 महिलाओं ने एक साथ महानाटिक करके लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया था और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का प्रमाण पत्र प्राप्त करके इतिहास रचा था। 7 दिवसीय दशहरा उत्सव के दौरान दिन में देव मिलन होता है, वहीं रात को कुल्लू के ऐतिहासिक लालचंद पार्थी कला केंद्र में सांस्कृतिक संध्या का आयोजन होता है, जिसमें देश विदेश से आए कलाकार अपनी प्रस्तुति देते हैं। इसके अलावा बड़े स्तर पर मेले का आयोजन भी होता है। इस दौरान मेले में हर वर्ष लाखों लोग पहुंचते हैं। मेले में तरह तरह की दुकानें और झूले लगे होते हैं, जिसका भी आनंद यहाँ आए लोग खूब उठाते हैं। उत्सव के 6वें दिन सभी देवी देवता इकट्ठे होते हैं और एक दूसरे से मिलते हैं, जिसे मोहल्ला कहा जाता है। मोहल्ला वाले दिन मेले में भारी भीड़ होती है। कुल्लू प्रदेश वासियों के अनुसार इस दिन मेले में शिरकत करना शुभ माना जाता है। मेले के 7वें दिन भगवान रघुनाथ जी अपने रथ पर सवार होकर कुछ प्रमुख देवी देवताओं के साथ व्यास नदी के किनारे जाते हैं, जहां लंका दहन किया जाता है। इसके पश्चात रथ को पुनः उनके स्थान पर लाया जाता है। और रघुनाथ जी को रघुनाथ के मंदिर में पुनर्स्थापित किया जाता है। इस तरह विश्व विख्यात कुल्लू दशहरा हर्षोल्लास के साथ संपूर्ण होता है। गरीब The next documentary is Poverty. Poverty is a challenge and can be overcome through education and through changing our beliefs. एक ऐसा शब्द जिसे सुनते ही दिल में एक डर और बेचैनी सी पैदा हो जाती है। कोई नहीं चाहता कि उसे कभी गरीबी का सामना करना पड़े। इस दुनिया में हर कोई एक अच्छा और संपन्न जीवन जीना चाहता है, मगर जिंदगी सिर्फ आस और काश से नहीं चलती। According to World Bank, more than 600 million people in the world are living under extreme poverty. और न जाने इस गरीबी की वजह से रोज कितने लोगों की मौत भी हो जाती होगी। अगर हमारे भारत देश की बात करें तो पिछले कई सालों के इतिहास में हमें सिर्फ गरीबी ही देखने को मिलती है। लेकिन एक सच यह भी है कि यह भारत देश एक समय में सोने की चिड़िया कहलाता था। बाहरी शासकों ने कई दशकों तक हम पर राज तो किया ही, मगर साथ में हमारे बड़े बड़े खजानों को भी खाली कर दिया। हमारी अनमोल धरोहरों को लूटा और नष्ट कर दिया। लोगों का बहुत बुरी तरह से शोषण किया और न जाने कितनी बुरी चीजों से हमारे इस देश को खोखला कर दिया। 15 अगस्त 1947 को हम इन शासकों से तो आजाद हो गए, मगर हमारी सबसे बड़ी दुश्मन गरीबी से हम अब तक भी आजाद नहीं हो पाए हैं। हम आज अपने आप को नया भारत कहते हैं, पर हमारे आज के इस भारत में 27.5% जनसंख्या गरीबी रेखा यानी पॉवर्टी लाइन से नीचे है। अगर इस पॉवर्टी लाइन की बात करें तो अर्बन एरियाज में 1286 रुपीस पर मंथ और रूरल एरियाज में 1060 रुपीस पर मंथ की इनकम या उससे कम की इनकम करने वाले लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे आते हैं।
वह गरीब कहलाते हैं। मगर यहाँ सोचने वाली बात यह है कि अगर कोई इंसान 1300 रुपए कमा रहा है तो क्या वह गरीब नहीं? उसे भी उतनी ही दिक्कतों और परेशानियों का सामना करना पड़ता है जितना कि एक 1286 रुपए कमाने वाला इंसान करता है। कहने को सिर्फ 27.5 है, मगर सही मायनों की बात करें तो यह आंकड़ा बहुत ज्यादा बड़ा है। न जाने कितनी ज्यादा तादाद में वो लोग होंगे जो पॉवर्टी लाइन से तो ऊपर है, मगर फिर भी बहुत गरीब हैं। छोटे छोटे बच्चे जिनके हाथ खिलौनों के लिए होते हैं, गरीबी उनके हाथों में ईंटें, कूड़ा या फिर चाय की ट्रे थमा देती है। बहुत सी लड़कियां सेफ सैनिटरी पैड्स के पैसे तक नहीं जुटा पाती, जिस कारण उन्हें कपड़े का इस्तेमाल करना पड़ता है। काफी केसेस में उन्हें खतरनाक बीमारियां तक लग जाती हैं। यहां तक कि आज पानी भी कुछ हिस्सों में एक लग्जरी बन चुका है। गरीबी की वजह से हमारे देश की बहुत बड़ी आबादी को स्लम्स में रहना पड़ता है, जहां की कंडीशंस ऐसी नहीं होती कि इंसान वहां पर बीमारियों से बचा रह सके। वहां पर सही सीवेज सिस्टम नहीं होता और बहुत गंदगी रहती है। ऐसी कंडीशंस में पक्के घर कम होते हैं। काफी घर प्लास्टिक या किसी और मटेरियल के होते हैं, जो अक्सर मॉनसून में पूरी तरह से खराब हो जाते हैं। जो कंडीशंस स्लम्स में होती हैं, वहां बहुत भयानक बीमारियां अक्सर मंडराती रहती हैं। धारावी एशिया की सबसे बड़ी स्लम एस्टेब्लिशमेंट। यहां पर 58,000 फैमिलीज और 12,000 कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स हैं। और फन फैक्ट यह है कि यह इंडिया की फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई में ही है। 48.35% ऑफ मुंबई's population lives in slums। और ऐसी बात नहीं है कि जगह की कमी है। According to 2017-18 economic survey, around 5 lakh houses are vacant in Mumbai। लोगों के पास इतना फाइनेंस नहीं है कि वो अपने लिए एक डिसेंट हाउसिंग अफोर्ड कर सके। गरीबी के कारण और बढ़ती महंगाई की वजह से बहुत लोग अनएस्केपेबल डेब्ट ट्रैप में फंसकर रह जाते हैं। कहने को हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। हम अपने आप को यंगेस्ट नेशन बताते हैं। हम अपने आप को लार्जेस्ट डेमोक्रेसी कहते हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 की रिपोर्ट में हम 107वें रैंक पे हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 कहती है कि हमारा रैंक दुनिया में 136वां है। अगर पर कैपिटा इनकम की बात की जाए तो हम 144 पर खड़े हैं। अगर हम लार्जेस्ट इकोनॉमी हैं तो इतने भूखे लोग क्यों हैं? पर कैपिटा इनकम इतनी कम क्यों है? द आंसर इज पॉपुलेशन। हमें लगता है कि हम ग्रोथ कर रहे हैं, बट रियलिटी फैक्ट यह है कि अगर ऐसा ही रहा तो अगले 10-15 सालों में हम काफी नीचे गिर जाएंगे और फिर वापस खड़ा होना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। एक्चुअली जितनी पॉपुलेशन है उस लेवल की प्रोडक्टिविटी हम नहीं दे पा रहे हैं, जिस वजह से देश में इतनी गरीबी फैल रही है। हमारी ज्यादातर पॉपुलेशन एक पॉवर्टी साइकिल के अंदर फंसी हुई है। लो इनकम होने की वजह से इंसान अच्छी एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर सकता और ना ही अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटीज, जिसकी वजह से ह्यूमन कैपिटल लेवल काफी लो हो जाता है और इसी कारण से इंसान की प्रोडक्टिविटी भी लो होती है। एंड इन द रिजल्ट लो प्रोडक्टिविटी की वजह से इंसान को एक अच्छी जॉब नहीं मिल पाती, जिसके कारण उसे लेस इनकम पे सरवाइव करना पड़ता है और इसी लो इनकम साइकिल के अंदर इंसान फंसकर रह जाता है। मगर ऐसा नहीं कि इस ट्रैप से कोई निकल नहीं सकता। हमें इस फाइनेंशियल पॉवर्टी से निकलने से पहले एक और तरह की पॉवर्टी से एस्केप करना होगा। अगर हम इस गरीबी से निकलने में सफल हो जाते हैं तो हम किसी भी परिस्थिति से निकल सकते हैं। ये है सोच की गरीबी। बिलीफ सिस्टम से गरीब होने पर इंसान हर मायनों में गरीब हो जाता है, लेकिन अगर
बिलीफ सिस्टम से अमीर है। अगर हमारी सोच है कि हमें पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बनना है, तो हम कुछ जद्दोजहद के बाद किसी तरीके से पढ़ाई करके सफल हो ही जाएंगे। लेकिन अगर हमारी सोच ही प्रोडक्टिव नहीं है, तो हम इस दुनिया के बेहतरीन स्कूल में भी पढ़कर सफल नहीं हो सकते। इस तरह से अगर हम ठान लें कि हमें पढ़ लिख कर इस गरीबी से निकलना है, तो फिर चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, किसी भी तरीके से पढ़ना पड़े, हम पढ़ लिख कर एक ना एक दिन सफल जरूर हो जाएंगे और अपने आप को इस गरीबी के चक्रव्यूह से जरूर निकाल पाएंगे। Next documentary for today is Amravati. This documentary is on Indian Institute of Mass Communications, Amravati. संत गाड़गे बाबा अमरावती विद्यापीठ के हरे भरे और सुरम्य वातावरण के बीच संचालित होता है भारतीय जनसंचार संस्थान का ये पश्चिम क्षेत्रीय परिसर। देश भर के मीडिया संस्थानों में IIMC का जो स्तर है, यह उसी परंपरा को आगे बढ़ाता रहा है। अमरावती महाराष्ट्र के विदर्भ का एक ऐसा शहर जो अपनी ऐतिहासिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विरासत के लिए देश भर में जाना जाता है। भारतीय जनसंचार संस्थान के इस परिसर की शुरुआत अगस्त 2011 में हुई थी। अपना एक दशक पूरा कर चुके इस परिसर में वर्तमान में हिंदी पत्रकारिता, अंग्रेजी पत्रकारिता और मराठी पत्रकारिता पाठ्यक्रम संचालित होता है। शुरुआत में 6 साल यहाँ अंग्रेजी पत्रकारिता का पाठ्यक्रम भी संचालित होता था। मैं अनिल यादव भारतीय जनसंचार संस्थान के पश्चिम विभागीय प्रादेशिक केंद्र में एकेडमिक एजेंट के तौर पे कार्य कर रहा हूँ। मेरा नाम प्रभात कुमार है। मैं इंग्लिश जर्नलिज्म डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। मैं एडवर्टाइजिंग, पब्लिक रिलेशंस और डेवलपमेंट जर्नलिज्म पढ़ाता हूँ। लेकिन भाषाई पत्रकारिता के उत्थान और वर्तमान समय में उसकी प्रासंगिकता को देखते हुए सन 2017 में इस परिसर में मराठी पत्रकारिता पाठ्यक्रम की भी शुरुआत हुई। नमस्कार, मैं डॉक्टर विनोद निताड़े, असिस्टेंट प्रोफेसर भारतीय जनसंचार संस्थान अमरावती। भारतीय जनसंचार संस्थान का अमरावती स्थित ये जो केंद्र है, यहाँ पर मैं मराठी इस विषय के लिए अध्यापक के तौर पर काम करता हूँ। समय के साथ सकारात्मक बदलाव के लिए जाने जाने वाला भारतीय जनसंचार संस्थान ने अपने इस परिपाटी को बनाए रखते हुए सन 2022 में इस परिसर में हिंदी पत्रकारिता पाठ्यक्रम की भी शुरुआत की। भारतीय जनसंचार संस्थान के अमरावती परिसर में सत्र 2022-23 से हिंदी पत्रकारिता पाठ्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। हिंदी जन माध्यमों की जरूरत के अनुरूप यहाँ पर विद्यार्थियों को शिक्षित एवं प्रशिक्षित किया जाता है। इस परिसर में कॉन्फ्रेंस हॉल, लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, रिकॉर्डिंग रूम और अन्य सभी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं जो मीडिया प्रशिक्षण और शिक्षण के लिए आवश्यक होती हैं। भारतीय जनसंचार संस्थान के इस केंद्र का अपना एक स्थायी परिसर पडनेरा के पास 14 एकड़ भूमि में बनने के लिए तैयार है। इस परिसर की सबसे बड़ी उपलब्धि यहाँ के विद्यार्थियों का 100% प्लेसमेंट है। यहाँ से प्रशिक्षण प्राप्त किए हुए विद्यार्थी आज देश भर के विभिन्न प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। So the last documentary is Krishi Vigyan Kendra Amravati, a documentary on the role and functioning of Krishi Vigyan Kendra Amravati. खेती पानी बिनती और घोड़े की तंग, अपने हाथ संभारिए लाखों लोग को संग। कवि घा की यह कविता किसान और कृषि जीवन को स्पष्ट दिखाती है। लैंड टू लैंड की विचारधारा के साथ कृषि विज्ञान केंद्र देश के किसानों को उन्नत तकनीक और कृषि शोधों से जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। कृषि विज्ञान केंद्र विभिन्न क्षेत्रों में जिला स्तर पर नवीन तकनीक पहुंचाने और किसानों को कुशल कृषि के तरीके का प्रशिक्षण देने का कार्य करता है।
कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना 1995 पूर्व राष्ट्रपति महामहिम दादाई पाटिल और उनके मिस्टर डॉक्टर देवी सिंह शेखावत जी ने किया था। उस समय एक छोटा सा पौधा लगाया था जो आज एक बड़ वृक्ष का रूप धारण कर लिया है। कृषि विज्ञान केंद्र के पास में मृदा परीक्षण प्रयोगशाला है, जैविक उत्पादन प्रयोगशाला है, नए नए बीज का प्रोडक्शन भी उत्पादन भी यहाँ होता है। अमरावती कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा मशरूम की खेती का भी प्रशिक्षण दिया जाता है। नए किसानों के लिए यह प्रशिक्षण बेहद आवश्यक होता है, जिससे उन्हें खेती से संबंधित तमाम जानकारियाँ जैसे तापमान, जलवायु, मिट्टी, बीजों की गुणवत्ता आदि का सही ज्ञान हो पाता है। एक बीज अनोखा होगा, गर्भ भरा में सोता होगा, पाकर ताप गर्भ भरा से सृजित प्राण होता होगा। अपनी ही शाखों पर फिर से बीज गढ़ा होगा, बार बार सृष्टि का यही क्रम चला होगा। निश्चल की ये पंक्तियां बीज के जीवन चक्र की एक सरल परिभाषा हमारे सामने रखती है। कृषि विज्ञान केंद्र का बीज परीक्षण विभाग उन्नतशील बीज के निर्माण के लिए निरंतर कई शोध करता रहता है। शोध के बाद प्राप्त बीजों का परीक्षण केंद्र की भूमि पर एक नहीं बल्कि 2-3 बार किया जाता है और परीक्षण के सफल होने पर उन बीजों का बड़ी मात्रा में उत्पादन किया जाता है। टेक्नोलॉजी खाद्य विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जो उत्पादों के उत्पादन, संरक्षण, गुणवत्ता नियंत्रण और अनुसंधान तथा विकास से संबंधित है। फल और सब्जी प्रसंस्करण केंद्र में महाराष्ट्र के अमरावती में होने वाले पैदावार जैसे आंवला, संतरा, मौसमी, अनार, प्याज से बनने वाले उत्पादों का प्रशिक्षण दिया जाता है। पशु किसानों के सबसे अच्छे मित्र होते हैं। आज खेती में उनका प्रयोग कम किया जाता है, लेकिन पशुपालन आज एक नए उद्योग के रूप में भी सामने आ रहा है। अमरावती कृषि विज्ञान केंद्र के अंतर्गत पशुपालन विभाग है, जिसमें 35 से 40 भैंस हैं, जो रोजाना 110 लीटर के करीब दूध देती है। कृषि विज्ञान केंद्र के अलावा यहाँ रेडियो साधना भी है, जो कि 90.4 की फ्रीक्वेंसी में 20 से 40 किलोमीटर की रेंज तक अपनी आवाज़ निरंतर पहुंचा रहा है। किया जाने वाला ऐसा रेडियो है जो कि समाज में व्याप्त ऐसे विषयों को सामने लाने का प्रयास करता है जो कि मुख्य धारा से अलग थलग पड़ जाते हैं। अमरावती में जन जागृति की यह अलग साधा रेडियो ने जगाई।
hope you all are enjoying the show. Now moving on to the films, we have our first film, So What? The movie highlights the issue of same-sex marriage. Welcome, ma'am. Welcome, sir. We were waiting for you. Oh, madam ji, we were also waiting for you. But my sweet little madam takes so much time for her makeup. Excuse me, dear husband. If you're done with your silly jokes, then shall we discuss the things? Ouchie. Please, ma'am. Sir. Shall we? Sir. Ma'am. So, what are your expectations? What kind of wedding you want for dearest Vrinda? Actually, let me explain you, ji. We want something grand, something super, super, something out of the world, ji. You getting it? Yes, sir. Oh, come on, you. Darling Meena, listen. We want something unusual. We have one daughter and we want her to be the happiest on her wedding day. Sure, ma'am. We are professional and we will make your wedding grand. Wedding? Oh, what a joke, ji, what a joke. Who will marry her? That too now. And one more thing, she's going to be senior citizen next year, yeah. We are not here to discuss my wedding. You get that, mister? Finger on our lips. Reena, darling, show me a few interesting decor options. Yes, ma'am. We can go with the pastel theme color or the coral base color because these are trending these days. But, oh, ji, madam, Veena, please. Kindly discuss all these decoration material later when I'm not around. Please discuss menu. I hope we are calling Ballu Halwai, who is famous for his delicious jalebi. What? What, sir? Uji, what? No. No way. No Ballu, no Shallu. Oh, come on, yaar. Ballu is so famous in the world of Jammu Chowk. And you forgot, we also came in our wedding. But, sir, I was thinking to invite the famous celebrity chef, Goddamn Ramsay. Correct. He'll be perfect. We can also ask him to make his famous cheese Wellington. Absolutely, ma'am. Whatever. But I still call Ballu. If not in the wedding, on the cocktail party. And you can stop me. Ma'am, rest, everything will be sorted by my creative team and surely we will call back you. With your darling. Just be careful. No tacky color should be. No flowers. No drapes. Should be of silly typical wedding lights. Or simply just cut it. Well, if we are done with the meeting, shall we leave? I need to do Ballu and then I also have to make world best dad meal with Vrita. Wow, world best dad? How cool and unique. I know, I'm cool and hot at the same time. Did you get it? Let's go, honey. Mr. and Mrs. Sage. Yes, Meena? I'm so sorry to stop you like this, but I forgot to ask an important question. What's the name of the groom? Actually, I was planning to design some neon signs and to make some hashtags for this event. So it was important to ask. It's okay, Veena ji. Now you may note down the name. It's Vrinda Weds Alamkrita. Oh, perfect. Could you repeat the name, please? Vrinda Weds Alamkrita. Don't you think it's a bit feminine? Oh, come on, yeah, it's feminine. Yes, it's Alamkrita, as soon to be daughter-in-law. What? Yes. Uji, what's the matter? So you mean your daughter Vrinda is marrying to a girl and her name is Alamkrita? So what? Moving on to the next film. What a wonderful world. Life is a complex mixture of today and tomorrow. There is a contrast in what has gone by and what is in store in future. Preserve what we have for the prosperity so that we can say, what a wonderful world.
A lot of days I wake up, I feel disproportionately euphoric. Time is running like water, it's sometimes good, sometimes bad. The flow of life is suboptimal. It's all about adapting to the change irrespective of the time. When there are bad times, some people ask us to inhale and exhale. Then we go out, step in the real world and do bad and think of someone else to blame. We all wear a mask hiding our true identity and walk with our eyes on the ground reflecting a character that's false to the world. We speak good and glitter the waste, and just like that, our masks deface. Humans devour on something that is provided for free. Taking things for granted is something we all see. Then we whine and cry and we see it deteriorating, just like our minds, which are infuriating. The color of the tranquility and the color of peace, so close while sharing a contrast. Admire the beauty and killing its heart. Is that how we praise and then play our part? We win or lose and look in the past. No wonder why we're now here sitting in the dark. How things have changed with the advent of time. Now look at all of us doing our time. Now back to where it all started. Just like what you give is what you get back. Believe in what sustains you and protect, preserve and improve our environment. So when we wake up tomorrow and look out the window, we say, What a wonderful film it was. The next film is Red Alert. The short film skillfully raises the concern and threat of unwanted strangers who lure the children away.
Moving on to the next film, The Voices of Men. The film talks about how work pressure and peer pressure create mental health issues. डेथ मतलब मृत्यु, फाइनेंशियल इश्यूज, पश्चाताप जैसे छुपे हुए हमारी सोसाइटी में काफी मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं जिसे हर रोज कोई ना कोई डील कर रहा है। कोई वजह नहीं है। शोर, आवाजें, तनाव हो रखा है, सर दर्द होता है आवाजों की वजह से। आवाजें? मिस्टर मनोज, आप इन आवाजों की वजह से यहाँ जब इधर हैं, राइट? तो आइए आपकी मदद करते हैं। ये आवाज़ों की वजह से मैं इधर नहीं आया था, मुझे मजबूर किया गया था। लास्ट सैटरडे पता नहीं क्या ही सोचा। तुझे पता है तेरी छोटी सी मिस्टेक की वजह से हम कितने क्लाइंट्स हो सकते हैं। तू टाइम पे तो आता नहीं है और पूरे दिन यहाँ बैठकर बस मनुष्यत फैलाता रहता है। अबे तू मुझे एक बात बता, तेरी बाल के साथ तेरी अकल भी झड़ने लग गई है क्या? किस चीज के पैसे दूं तुझे? किस चीज के? ओए गधे, तेरा जो लॉक फाइल का इशू था ना, मैंने क्लियर किया ना आज ओवर टाइम करके, ठीक है ना? और तेरी बीवी को अगर पता चल गया ना तो यहाँ क्या बच्चा उड़ाता है ऑफिस में। तो मुझे ना ऑलरेडी बहुत टेंशन है, ठीक है? और तेरी फाइल्स मुझे सॉरी I'm sorry मनोज अबे हेलो, तेरे से बात कर रहा हूँ मैं। कहाँ जा रहा है तेरा? चुपचाप से फाइल्स कंप्लीट कर और मेरे कैबिन में भिजवा, समझा? मैं चाहता तो वो सब कर सकता था जिसके वो लायक है, लेकिन ये डिसाइड करने वाला मैं कौन होता हूँ? मुझे गुस्सा आ रहा था। एंगर इश्यूज। एंगर इश्यूज तो नहीं गए थे इसके, क्योंकि मैंने कुछ किया नहीं, बस मैंने सोचा और ये नॉर्मल है मेरे लिए। नहीं, नॉर्मल नहीं है। लेकिन मिस्टर मनोज, इसका रूट कॉज हमारे लिए जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। आर यू स्लीपिंग वेल दीस लास्ट फ्यू डेज? कुछ फनी बोल रहे हैं? नहीं, वो बस नींद आ नहीं रही है तभी। कोई आइडिया कि कब से चल रहा है ये सब? यही कुछ पता नहीं, मुझे याद नहीं। एंगर इश्यूज का मेन कॉज होता है नींद ना आना।
नींद आने की काफ़ी वजह हो सकती है कि आपके पास में कुछ ऐसे एक्सपीरियंस रहे हो जिसका ट्रॉमा लेके आप बैठे हो, रात को एंजाइटी होना, इधर उधर टहलना, प्यास लगना, पसीना आना, काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं। इसमें से कुछ भी हुआ है आपके साथ? हाँ, पर इसमें इतना सीरियस क्या है? लाइक ये तो कॉमन है ना, आई मीन मेरे लिए तो कॉमन है। इसके अलावा आई मीन कोई पर्सनल इश्यूज या पर्सनल रिलेशंस जिसकी वजह से आप थोड़े परेशान चल रहे हैं? कुछ दिक्कतें हैं, पता नहीं, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा, आई डोंट नो। टाइम क्या हो रहा है? 4:30। 4:30 और आज भी लेट? यार तो थोड़ा ही तो लेट हुआ हूँ। थोड़ा लेट? टाइम की कोई कीमत ही नहीं है। एक टाइम भी तो मांगा मैंने तुमसे। तो तुम गुस्सा क्यों कर रही हो? मैं काम करके आ रहा तो हूँ। काम तो मैं भी कर रही हूँ ना। यार तो छोटी छोटी बातों पे गुस्सा। मैं गुस्सा नहीं कर रही हूँ मनोज। तो और क्या कर रही हो तुम? यार तुम रहने दो। मनोज तुम रहने दो। अब मैंने तुमसे एक्सपेक्ट करना ही छोड़ दिया है। छोड़ो, मेरी तुमसे बात नहीं। मिस्टर मनोज, आपके काफ़ी सारे ऐसे इश्यूज हैं जो अगर आप किसी से बात करते हैं या किसी से कम्युनिकेट करते हैं तो आपकी मेंटल हेल्थ के लिए काफ़ी बेटर लगता है। ऐसा नहीं है कि मैंने कम्युनिकेट करने की कोशिश नहीं की। तो आपने किसी से कम्युनिकेट करने की कोशिश की है, राइट? हमें करना है क्योंकि पूरे बार इंस्टीट्यूशन में हमको जो टाइप हुआ था कि बाद सिलेक्शन नाम था, पता है उसका कितनी सिक्योरिटी इशू आया था शायद, आई गेस उसी। So Manoj, how was the experience in reception? You managed the whole security thing, right? You were seeing ना all over area, मैंने सुना है बाद में कोई इशू आया था, आई गेस। Manoj, what happened, bro? सब ठीक है? You're asking something. खाया भी नहीं अभी तक, शुरू नहीं किया, ठंडा हो गया। क्या बात भाई? बहुत टेंस सा लग रहा है। अरे उधर भी बहुत टेंस हो रहा है। बता ना, कुछ शेयर करना तो बता ना। ऐसे शेयर करने से मन हल्का होता है। ऐसा कुछ नहीं यार, सही में टेंस लग रहा है बहुत। यार समझ नहीं आ रहा, पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ। काफ़ी प्रेशर है दिमाग में, काम का, ऑफिस का, रिलेशनशिप में भी इश्यूज चल रहे हैं और नींद नहीं आती, सो नहीं पा रहा हूँ मैं ढंग से यार। सर दर्द होता रहता है, अजीब तरह की आवाज़ें आती रहती हैं, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अबे यार मनोज, इतनी सी बात पे ये बात है यार। मनोज मनोज कुछ बोलने वाला था, बता। नहीं यार, ठीक है, पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है। आई मीन देयर इज सो मच इन माय हेड बट देयर इज नथिंग। और इसीलिए उस दिन फोटो पर बेंच पे जो हुआ, मनोज तेरे बस की नहीं है लाइफ हैंडल करना। तू लूजर था, लूजर ही रहेगा। मनोज, भाई का काम हो गया भाई। अरे इससे काम होगा। अरे क्या मनोज, तो लड़की है क्या? क्या रोता रहता है यार? मनोज तुमसे तो एक्सपेक्ट करना ही बेकार है। ये क्या कहने चाहता भाई? मिस्टर मनोज, ये चिड़चिड़ापन, ये छोटी छोटी बातों पे आपका गुस्सा करना, नींद ना आना, अपनी बातें किसी से शेयर ना करना, और ये जो आवाज़ें आप कह रहे हैं जो आपके दिमाग में शोर मचा के लगती हैं, ये सब आपको नॉर्मल लगता होगा, पर ये नॉर्मल है नहीं मिस्टर मनोज। और
ये इन सब चीज़ों का ही नतीजा है जो आप आज यहाँ मेरे सामने बैठे हैं। एंड आई एम अफ्रेड कि अगर आपने अभी कुछ नहीं किया तो आप डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। The next film is Under the Darkness. Although we talk very casually about split personality, but how much we know about it and what can be its repercussions is the focus of this film. तूने मार दिया उसे। पापा, मैं क्यों नहीं? पापा मम्मी आगे उसी तरह क्या बिगाड़ा था? आप क्या कह रहे हो? किसको मारे? माँ बोलो ना मेरे को। माँ ये क्यों बोल रहे हैं मुझे? माँ बोलो प्लीज। माँ पापा बोलो ना, मैं किसी को नहीं मारा, मैंने नहीं मारा किसी को। So the next film for today is Kumar. Kumar is an abstract story of an individual who come to a recluse
place looking for accommodation. The film personifies the struggles of life. इसलिए आपसे मिलना चाहते थे। नहीं बता, नहीं बता। शांत रहिए भैया, शांत रहिए।
भाई आप हमारे आदर्श, इसलिए आपसे मिलना चाहते थे बस भैया। हम ITI कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल से। जानते हैं सर क्या बोले हमारे, अगर हम अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर लिए तो वहां पढ़ा भी सकते हैं। तो ठीक तो है, लेकिन हमको यहाँ नहीं रहना, नौकरी लगवा सकते हैं। घर कहाँ है? ये पास में है भैया। और करते क्या हो? पढ़ते हैं भैया, बताएं। क्या मतलब 10 तक के बच्चों को हम भैया पढ़ा भी लेते हैं। मुझसे क्या चाहिए? और इतनी सुबह 7 बजे इतना तैयार होकर आए हो। आप आदर्श हैं हमारे भैया, इसलिए आपसे मिलना चाहते थे। बट हमारे रेज्यूमे से शुरू करते हैं। रेज्यूम बनाया है कभी अपना? तुम्हारा पूरा नाम क्या है? नीरज, सिर्फ नीरज। जैसे सरनेम होगा ना? सरनेम तो नहीं है भैया। ऐसे थोड़ी होता है, जैसे देखो मेरा झा है, अजीत झा, वैसे ही पांडे, मिश्रा, यादव, ऐसे ही कुछ तो होगा ना। अच्छा, पिताजी क्या नाम है? पिताजी तो देखो जैसे यहाँ एक मैंडेटरी फील्ड है, तो कुमार लिख दो। हाँ भैया कुमार लिख दो, सेफ भी लग रहा है भैया। तो है बहुत। हाँ भैया, जात पात में भी तो कुमार, बिलदार, बड़ई, पेतवा, तेली सब तो छिप ही जाता है ना। और लड़का हो तो कुमार और लड़की हो तो कुमारी। ऐसे भी तो शादी के बाद लड़की का तो नाम चेंज ही हो जाता है ऐसे में। क्या कहते हैं, पानी करते हैं? हाँ भैया कुमार ठीक है। चलेंगे। The next film is MOI. The film dwells into the emotions and travails of a student in his hostel life. সময় বৈ যায় নিৰলস আৰু অবিৰাম। ভিন্ন আবেগ আৰু অনুভূতিৰ টোপোলাটো নিজৰ বুকুৰ মাজত সযতনে সাৱটি ই কেৱল বৈ যায়। সময়ৰ এই অবিৰত যাত্ৰাৰ ব্যস্ততাৰ মাজতে প্ৰাণ পাই উঠে জীৱন কাহিনীবোৰৰ একো একোখন উপন্যাস। সময়ৰ এই লক্ষ্যহীন প্ৰবাহত জীৱন্ত হৈ উঠে মতজীৱন স্মৃতি। এনেদৰে সময়ৰ লগত খোজত খোজ মিলাই ময়ো সাক্ষী হৈ ৰৈছো এইখন ছাত্ৰবাসৰ হাজাৰ হাজাৰ জীৱন, সপোন, আশা আৰু ইয়াৰ ভগ্নাৱলী। এই কাহিনী মোৰ, এই কাহিনী জীৱন আৰু মৃত্যু, এই কাহিনী সময়। মই দেখিছো অজস্ৰ সপোনৰ জাগ্ৰত অগ্নিশিখাৰ উত্তাপ চকুত লৈ মুখত উৎসুকতাৰ আৰু হেঁপাহ নিশ্চিত এটি নিচিতীয়া হাঁহি কঢ়িয়াই এই ছাত্ৰাবাসত প্ৰৱেশ কৰা হেজাৰজনৰ উজ্জ্বল মুখ। মই দেখিছো সেই সপোন পূৰাবলৈ কৰা বিৰামহীন চেষ্টা। মই দেখিছো আপোনজন আৰু নিজৰ ঘৰখনৰ পৰা দূৰত থাকি ঘৰ এখন সজাই তুলিবলৈ পাৰ কৰা নিদ্ৰাহীন নিশাৰ কৰুণ চকুপানী। তাত শুনিছো স্মৃতিৰ আৰ্তনাদ। আকৌ মই দেখিছো একতা। মই শুনিছো ছাত্ৰাবাসৰ বিজয়ত একমুখে গৌৰৱেৰে মৰা সেই আবেগৰ চিঞৰ। আৰু
আৰু দেখিছো ধ্বংস, দেখিছো ৰাতি মাতাল একাংশৰ বৰ্বৰতা, সহিছো নিমাতে অশ্লীলতা, দেখিছো নিৰ্মম অত্যাচাৰ, শুনিছো যন্ত্ৰণাত কাতৰ হেজাৰজনৰ হিয়া, দেখিছো থান-মান হোৱা সপোনৰ ভগ্নাৱশেষ, সিঁচৰিত হৈ পৰা হেঁপাহৰ আইনাখনত প্ৰতিবিম্বিত ক্লান্ত প্ৰতিবিম্বৰ ভগ্ন বুকুৰ, নগ্ন নিচাৰ নিষ্ঠুৰতা, মমতা শূন্যতাৰ শেষত মই দেখিছো সান্তনা, কান্ধত হাত থৈ নিজকে নিজে দিয়া মিছা সান্তনা, আৰু তাৰ পিছত দেখিছো ভাগৰ পৰাজয় কান্দোন আৰু পঢ়িছো কাপাতত কপা কপা হাতেৰে লিখা অন্তিম আবেগ, সাক্ষী হৈ ৰৈছো হাজাৰ হাজাৰ ছুইচাইড নোটৰ অসহ্য কৰাত্মনা, দেখিছো তাৰ জীৱনৰ শেষত দেখিছো মৃত্যু, মই সাক্ষী, মই সহিছো মৃত্যু, বাৰে বাৰে মৰিছো, বাৰে বাৰে কান্দিছো, বাৰে বাৰে নিজকে দুখ দিছো, বাৰে বাৰে পাপ কৰিছো, আৰু ওলমি ৰৈছো এই ছাত্ৰাবাসৰ এটি বিশেষ ঠাইত, ওলমি ৰৈছো গণনাতিক জীৱনৰ মৰিশালী এখন বুকুত বান্ধি, সদায় নীৰৱে উচু, নিজকে বুজাওঁ, পাহৰিব খোজো সেই চিতাত নিৰুত্তাপ, পাহৰিব খোজো ওলমি ৰোৱা মৃতদেহৰ দুৰ্গন্ধ, এনেদৰে নিঃশেষ হৈ যাব নেকি হাঁহিব, এনেদৰে মৰহি যাব নেকি ফুল কোমলীয়া কলিবোৰ, সময়ৰ লগতে ময়ো বিচাৰি ফুৰিছো ইয়াৰ উত্তৰ, সময়ৰ লগতে ময়ো সাক্ষী হৈ ৰৈছো বাধ্যতাৰ কৰুণ চিতাত অগণন সপোন আৰু আশাই আত্মজা দিয়া এই শ্মশান, লুকাই পৰিব নেকি এই পিছত, মোৰ দৰে হেজাৰজন ফেনৰ ভয়, এয়া মই। What a heart-touching film it was. Moving on to the next film, Tiffin Box. As the name suggested, the film is built around an individual who loves to cook and wants people to appreciate his food. The film is based on a relationship centered around the tiffin box. আহিলা? দিনটো কেনেকুৱা গ'ল তোমাৰ? আগৰ দৰে। শুনা না, মই তোমাৰ কাৰণে টিফিন লৈ আহিছিলোঁ, খাই লোৱা। নাই নাই, মই কলিগছৰ লগত অলৰেডি লাঞ্চ কৰিলোঁ। হেল্ল', হয় হয়, মই গৈ আছোঁ। আই উইল এটেণ্ড দ্য মিটিং ইন 5 minutes. হেল্ল', হেল্ল' অৰ্পিতা, তুমি আহিছানে? অঁ ৰ'বা, মই গৈ আছোঁ। খালি মই বেছি দেৰি কৰিব নোৱাৰোঁ হা।
হাই অৰ্পিতা, হাই। তোমাৰ কাৰণে মই ৰুটি আৰু আলু ভাজি আনিছিলোঁ। লোৱা খাই লোৱা। চোৱা অজয়, মই তোমাক আগতেও কৈছোঁ মোৰ কাৰণে টিফিন নানিবা। মই কলিগছৰ লগত অলৰেডি লাঞ্চ কৰিলোঁ। আৰু তুমি এইবোৰ কৰি আমাৰ দুয়োটাৰে সময়বোৰ কিয় নষ্ট কৰিছা? পাৰিলে এটা চাকৰিৰ ব্যৱস্থা কৰা। অ'কে অ'কে ৰিলেক্স। তোমাৰ যদি খাবলৈ মন নাই আমি ফুৰিবলৈ যাওঁ ব'লা। নাই, মই আজি একদম নোৱাৰোঁ, মোৰ বহুত কাম আছে। নোৱাৰা নেকি? নোৱাৰা যদি একো নাই দিয়া, মিটিংখন কৰি লোৱা। বহিব পাৰোঁ নেকি? হাই। আপুনি কাৰোবাৰ কাৰণে ৰৈ আছে? নাই নাই, তুমি? নাই। এইটো আপোনাৰ? মোৰেই। আচলতে মই কুকিং কৰি বহুত ভাল পাওঁ। আজি ৰুটি আৰু আলু ভজা বনাইছিলোঁ। ট্ৰাই কৰি চাবা। The next film is Lipstick. A tragic end and the trauma of living with a domestic violence is depicted well in the short film Lipstick. अच्छी लग रही है आज मेरी बेबी। कुछ खास है क्या आज? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बस मेरा मन हो रहा था। बहुत अच्छी बात है, एकदम घर पे रेडी होके रहना चाहिए एकदम। बस ये जो लिपस्टिक है ना तुम्हारी, बोला था ना तुझे मैंने ये कम करके लगाया कर। लिपस्टिक ज्यादा पसंद नहीं है मुझे, मत कर। नेक्स्ट टाइम पहले भी समझाया था ना मैंने तुझे, मत कर ये वाली चीज। प्लीज प्लीज आने का भी टाइम लग गया है, खाना भी खा लेती हूँ। अरे आप यहीं सो गए हैं? मैनेजर, हेलो जी सर। सॉरी सर, वो जी जी चल। सॉरी सर, वो कल से शिफ्ट हो जाएगा कोई मैं
कल से बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। मैं जल्दी सर फायर मत कीजिए प्लीज। मैं ठीक से काम करूंगा, ये कल से नहीं होगा प्लीज सर। ठीक है सर। अरे अजब इतनी जल्दी क्या आ गए? टाइम लगता है एक दरवाजा खुलने में। अब आप इतनी जल्दी आई गए ना, चलिए। घूमने जाना है तेरा, घूमने जाना है। उधर ऑफिस में मैनेजर जी ने देखा है तू क्या कर रहे हो तुम लोग? सदा मार ही रहा तुम लोग। बंद कर अपना ये रोना धोना। जाके खाना निकाल। पूरी रात नहीं मेरे पास तेरा ये रोना धोना देखने के लिए। क्या मिला दिया अभी तुम्हें? तोड़ दो, सब कुछ तोड़ दो मेरे घर का। एक ढंग से काम नहीं हो सकता तुझसे किचन का। पूरे दिन तो घर पे रहती है तू, हाँ? फिर भी एक काम ठीक से नहीं कर पाती तू। मुझे समझ में नहीं आता तेरे माँ बाप ने क्या सिखाया तुझे। मन कर रहा है इसी चाकू से तुझे मार डाले। एक बोझ तो निकाल बोला यार। मन कर रहा है इसी चाकू से तुझे मार डाले। एक बोझ तो निकाल बोला यार। सुनिए, आप यहाँ क्यों सोए हैं? उठिए, उठिए जाके बेड पे सो जाइए। सुनिए, सुन रहे हैं आप? अरे आप यहाँ क्यों सोए हैं? उठिए ना, उठिए, जाइए जाइए जाके बेड पे सो जाइए। ठीक है ना, रोज आप मारते हैं, आज मैंने मार दिया तो क्या हो गया? उठिए चलिए, आपको खाना खाना था ना, आपके पास तो पूरी रात नहीं है मेरा खाना खाने के लिए। उठिए चलिए, चलिए उठिए, आपको सुनाई नहीं रहा है, मैं आपको उठा रही हूँ। सुनिए, उठिए, चलिए, चलिए ना, उठिए, उठिए, आपको समझ में नहीं आ रहा। मारिए ना, मारिए, मारिए मुझे, मारिए। देखिए लिपस्टिक देखिए मेरी, आज मैंने आपके हिसाब से लगा दी। देखिए लिपस्टिक देखिए ना, देखिए, मारिए, देखिए ना, उठिए ना। सुन भी नहीं तू। उठिए, अब नहीं मारेंगे आप मुझे, मारिए, उठिए ना। इनके आने का टाइम भी हो गया है, खा लो। Moving on to the next film for today, Dharm Sankat. The short film deals with the changing social fabric and raises the issue of intercaste marriage. नमस्कार भाई साहब, बड़ी दुविधा में हूँ, आपका मार्गदर्शन चाहिए। हाँ ठीक है, एक काम करो,
घर आ जाओ, चाय साथ में पीते हैं। पापा वो मैं एनजीओ कराता हूँ। अरे बेटी, आज का क्या इवेंट है? अरे वो गरीब बच्चों को खाना खिला रहे थे तो कुछ सामान बनवाओ, बस वही अरेंज करवा रहे थे। ठीक है बेटा। हाँ राजीव, बताओ क्या क्या हुआ? अरे भाई साहब क्या बताऊँ, कल बेटा कह रहा था इतनी लड़की पसंद है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, बच्चे ने अच्छी लड़की ही चुनी होगी, तुम नाम की चिंता करते हो। क्या बताओ भाई साहब, लड़की दूसरे समाज की है। भाई साहब आधे मन में बेटे को देखूं या समाज को? देखो राजू, तुम हमारे समाज के स्तंभ हो, तुम्हारे इस निर्णय से पूरे समाज पर असर पड़ सकता है, और तो और समाज के अगले इलेक्शन पर इसका विपरीत असर पड़ सकता है। भाई साहब छोड़ की बात की पक्की की आपने? अरे इच्छा नहीं लगती इसकी, हर बार बात को टाल देता। बेटा, राजीव अंकल पूछ रहे थे तुम्हारी शादी के बारे में, अब समझ में नहीं आता लोग उनको क्या जवाब दूं। तो बेटा कोई लड़की हो तो बता दो। पापा वो लड़की तो है, लेकिन बताकर कोई फायदा नहीं है। क्यों, तुम्हें पसंद नहीं करती क्या? अरे नहीं नहीं, पसंद तो करती है, पर वो अपने समाज की नहीं है। पापा आपकी समाज में बहुत इज्जत है, अब आप लड़के की खुशी देखेंगे या समाज को, मैं इस कंफ्यूजन में आपको डालना नहीं चाहता। मैं जैसा हूँ मैं वैसे रह लूँगा, और फिर अगले महीने समाज के इलेक्शंस भी तो हैं। हेलो भाई साहब। अरे राजीव, ललित को मना कर दिया तुमने? भाई साहब अभी मना करने की हिम्मत नहीं हुई है। हाँ कर दो राजीव। क्या बोल रहे हैं भाई साहब? रात भर सोचता रहा तो एक बात समझ में आई, समाज जरूरी है, समाज के काम भी जरूरी है, लेकिन बदलाव भी जरूरी है, वरना जिस समाज के लिए हम काम कर रहे हैं वही समाज पीछे छूट जाएगा। समाज के लिए और खुद की खुशी, दोनों में से किसी एक को चुनने का धर्म संकट हम अपने बच्चों पर तो नहीं डाल सकते। और भाई साहब इलेक्शन? अरे बच्चों की खुशी से बढ़कर थोड़ी ना है। सही कह रहे हैं आप भाई साहब। अरे बेटा अब तो लड़की से मिलवा दे। बेटी नाम क्या है आपका? अंकल जी अनिका। और पापा क्या करते हैं आपके? अरे अंकल जानते हैं आप,
अपने समाज के ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष हैं। अरे तुम महेंद्र की लड़की हो? हाँ ये अपने समाज के महेंद्र की लड़की है? जी। अरे क्यों किया तुमने ऐसा? मैं क्या इस शादी के लिए मना करता? पापा मुझे पता था कि मेरी शादी में दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो समाज के नाम पे दूसरों के घरों में दिक्कत आ रही है उसका क्या? और फिर बदलाव तो अपने घर से ही शुरू होता है ना। What an amazing message they conveyed. Now, moving on to the next film is Smile. How an innocent smile can change the deadliest hearts is the focus of the film Smile.
next film for today is The Green Room. The film deals with the horror and trauma of a struggling actress. अजीब सा हीरो। अपेक्षा सॉरी, हमने तुम्हारा रोल शिवांगी को दे दिया बिकॉज शी इज मोर एक्सपीरियंस देन यू। लेकिन सर वो मेरा रोल है, मैंने ऑडिशन दिया उसके लिए। हमने तुम्हारे लिए दूसरा रोल डिसाइड करा। नहीं सर, वो मेरा रोल है। मैं शट अप, अगर करना है करो, नहीं तो जाओ। हेलो, हाँ सर, हाँ बस आ रही हूँ, थोड़ी देर में आ रही हूँ। ये अंधेरा कैसे होगा? अपेक्षा उठ यार तू तो सो ही गई, हमारा ऑडिशन है, उठ जा। शिवांगी, बहुत ही बुरा सपना आया था। अरे अभी तो ये क्या सपने को अपने के बारे में सोच रही है? चल चल ऑडिशन दे, जल्दी चल।
चल जल्दी चल यार। The next film is The Republic Day. The short film symbolizes the relevance of national flag. Let's take a pledge to not to spoil the national flag. आगे स्कूल से तुम कैसा रहा तुम्हारा स्कूल? बहुत अच्छा। मम्मा ये देखो मैंने आज क्लास में ये फ्लैग बनाया है। अरे वाह, बहुत सुंदर बनाया है आपने। मम्मा पता है कल हमारे स्कूल में रिपब्लिक डे फंक्शन होगा, उसमें हम ये फ्लैग के साथ परेड करेंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है। पर वैदेही एक बात बताओ, 26 जनवरी के बाद आप इस फ्लैग का क्या करोगे? मम्मा रिपब्लिक डे के बाद ये फ्लैग किस काम का, इसे हम फेंक देंगे और नेक्स्ट ईयर फिर से न्यू बनाएंगे। मम्मा मैं पानी पी गया। हर साल भारत में 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। जगह जगह पर तिरंगा लहराते हैं, चाहे वो स्कूल्स हो, कॉलेजेस हो, ऑफिसेज हो। लहराता हुआ यह झंडा हमारी आन बान और शान कहलाता है। पर क्या कभी किसी ने इस बात पर गौर किया है कि यही तिरंगा जिसे हम अपना सर उठाकर सलाम करते हैं, 26 जनवरी के बाद इसी तिरंगे को कड़क धूप, बरसात, धूल मिट्टी से खराब होकर कहीं न कहीं लटके पाए जाते हैं और कागज या प्लास्टिक से बने कुछ झंडे तो कूड़ेदान तक पहुंच जाते हैं। जिस तिरंगे को ऊंचा रखने के लिए हमारे देश के सैनिक अपनी जान हथेली पे रख के 24 घंटे हमारे देश की सीमाओं पर तैनात रहते हैं, उन सब के लिए और हमारे पूरे देश के लिए आइए इस बार इस तिरंगे को संभाल के रखें और अपने देश की गरिमा को बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत। Moving on to the next film, Kurukshetra Karma Bhumi. Kurukshetra epitomizes the Mahabharata and the Karma Bhumi of not only Kaurav and Pandavas, but the life of an individual too. पुराणों के अनुसार हस्तिनापुर को हरियाणा का वर्तमान आधुनिक राज्य माना जाता है। कुरुक्षेत्र कौरवों और पांडवों के पूर्वज राजा कुरु के नाम पर एक क्षेत्र है। यह वह स्थान है जहां महाभारत युद्ध लड़ा गया था। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। युधिष्ठिर धर्मात्मा एवं सत्यवादी योद्धा। भीम अपनी शक्ति के लिए प्रसिद्ध। अर्जुन महान योद्धा एवं धनुर्धर के रूप में विश्वविख्यात। नकुल निपुण घुड़सवार पशु विशेषज्ञ। सहदेव तलवार में निपुण। पांडव महाभारत के 5 प्रसिद्ध वीर योद्धा थे जिन्हें पांडु पुत्रों के रूप में जाना जाता है। कौरव नाम धृतराष्ट्र के पूर्वज कुरु के वंश से आया है
जो एक गतिशील राजा और पृथ्वी के सभी कोने के शासक हैं, इसलिए कुरु वंश के वारिसों को कौरव कहा जाता है। भूलो मत दुर्योधन कि उनके सेना में खुद वासुदेव कृष्ण है और वह खुद अकेले ही इस युद्ध को समाप्त कर सकते हैं। वासुदेव मैं रणभूमि के बीच में जाकर दोनों पक्षों को देखना चाहता हूं। पार्थ, कर्म करो और फल की इच्छा न रखो, क्योंकि फल का ज्ञान ही कर्मकृत है। कर्म और फल तुम्हारे वश में नहीं है, इसलिए तुम अस्त्र उठाओ और ये धर्म युद्ध करो। पार्थ, जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है और मरने वाले का जन्म निश्चित है। आत्म जो अटल है उसके लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। परिवर्तन संसार का नियम है। हे अर्जुन, विषम परिस्थितियों में कायरता को प्राप्त करना श्रेष्ठ मनुष्यों के आचरण के विपरीत है। ना तो ये स्वर्ग प्राप्ति का साधन है और ना ही इससे कीर्ति प्राप्त होगी। जैसे इसी जन्म में जीवात्मा बाल, युवा और वृद्ध शरीर को प्राप्त करती है, वैसे ही जीवात्मा मरने के बाद भी नया शरीर प्राप्त करती है। इसलिए वीर पुरुष को मृत्यु से घबराना नहीं चाहिए। लोगों का आज भी मानना है कि उस युद्ध में इतना रक्तपात हुआ था कि वहां की भूमि का रंग लाल हो गया था, जिसमें 70 लाख सैनिक कौरव के पक्ष में और 44 लाख पांडवों के साथ थे। ये महाकाय युद्ध 18 दिनों तक चला था। इस युद्ध के समाप्त होने तक केवल 12 मुख्य योद्धा ही बचे थे। इस कारण से कुरुक्षेत्र को कर्म भूमि की उपाधि मिली। The next film is Choice. The film talks about how pressures of life make youth easy prey to drug addiction. हेलो निखिल, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? काम क्यों नहीं कर रहे तुम ढंग से? क्या सोचते रहते हो? मुझे जल्द से जल्द ये काम चाहिए। I'll give you 6 hours. Okay sir, I will look into this matter as soon as possible. तुम्हारे काम में बहुत डिले है। क्या सोचते रहते हो? इस मंथ का परफॉर्मेंस रिपोर्ट आया है। क्या सोचते रहते हो? क्या सोचते रहते हो? क्या सोचते रहते हो? इस मंथ का परफॉर्मेंस रिपोर्ट आया। परफॉर्मेंस रिपोर्ट आया। परफॉर्मेंस रिपोर्ट आया। तुम्हारे काम में बहुत डिले काम।
है। आप प्लीज आए और आकर बॉडी ले जाए। अबा भाई ऐसे तो निकाल। नहीं चाहिए। After all, life is all about the choices you make. The next film is Catastrophe. Film deals with the mental trauma and showcases the waste created by mankind.
The next film is Now You See Me, a short film depicting a game of truth and dare between three friends goes haywire. अच्छा तू भूतों में मानता है? ना बिल्कुल भी नहीं, इतना सा भी नहीं, इतना सा भी नहीं मानता। क्यों भाई? मेरा सिंपल है यार, जो नहीं देखा उसको क्या मानना? तो तुम चीजों में मानता ही नहीं जो तूने देखी ना हो। हाँ मैं देखो एक सिंपल सा फंडा है मेरा, जिन चीजों को नहीं देखता उसमें मैं नहीं मानता, फालतू का विश्वास मैं नहीं करता, ठीक है? और जैसे ये बॉटल ना अभी मुझे पुकार रही है और समझ देखेगा तो मान जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अरे यार इस बॉटल को ना पता नहीं मुझसे क्या तकलीफ है, घूम फिर के मेरे पास ही आ जाती है। अरे आगे बढ़ो, क्या चूज करोगे? ट्रुथ जी। अच्छा तो तू बता, तुझे भूतों से डर लगता है या मतलब भूतों में मानती है तू? यार मुझे तो बहुत डर लगता है। सच्ची में मुझे तो भूतों से डर नहीं लगता। हैं? याद रखूंगा तेरी ये बात, देख ले। ट्रुथ और डेयर? ट्रुथ। अभी पहले भी तुमने ट्रुथ दिया था, ये नहीं ये गई गलत बात है। डेयर। डर नहीं लगता था ना इन्हें? हाँ जी, तो चलिए मैं एक बात बताता हूँ कि एक रूम है बेसमेंट में D2, कहा जाता है कि वहां पर कोई भूतिया आत्माएं भटक रही हैं, तो ना थोड़ी देर के लिए वहां पर जाना है और तब तक रहना है जब तक हम बाहर आने को ना कहें। बस जाना है और रहना है, इतना सा काम। तो चलो आओ। चल जान दे। हाँ हाँ। खुश कियारा, ये तुम लोग खड़े हो ना? आर्या, दरवाजा खोल आर्या। खुल क्यों नहीं रहा? आर्या,
क्या? Big. रुक। मुझे डर लग रहा है। मुझे घर जाना है। कुछ नहीं है, कोई बस कोई डरा रहा है हमें, तो बहुत घिनौना मजाक है जो ये। नो, वी आर नॉट स्कैर्ड ऑफ यू। Now see. Moving on to the next film, Break Your Silence, a film on fighting sexual harassment. Don't be silent, but fight it. Don't worry, we'll be there in 30 minutes. Surprise, surprise. नहीं वो बाहर से। अच्छा। आप बैठिए, मैं आपकी कुछ करूँ। जल्दी करा रोही, चाचू किसी भी टाइम आते होंगे। मैंने बहुत मिस किया चाचू को, कितने टाइम बाद आ रहे हैं ना। हाँ बिल्कुल, लेकिन पहले काम कर ले जल्दी से। हाँ ठीक है। अरे चाचा, कैसा बेटा? मैं बढ़िया। अरे बेटा, बेटी का पैर नहीं छूती गले गलती है। आओ चाचा। हाँ बेटा, पहले देखा था तो इतनी सी तब इतनी बड़ी हो गई, पहचान में ही नहीं आ रही। आलूंगी। हाँ आई। अरे स्माइला कहाँ जाएगी?
अरे ये सब क्या हुआ? मम्मी को मामा ने मेरे हाथ नहीं, चुप, मैं समझ सकती हूँ। बेटा के घर की बात है तो ऐसे चलो चलो जाके करते हैं एक बार। आरोही, ये क्या हुआ? मम्मी वो चाचा ने बगल वाले कमरे में ही तो थी, तो मुझे बुलाया क्यों नहीं? मैंने आवाज लगाने की बहुत कोशिश की पर मैं उसका कुछ करती हूँ, बट तू कुछ मत बोलियो वरना हमारी बहुत बदनामी होगी। मुझे मेरे मामा के अगेंस्ट केस लिखवाना है। क्या बात है, बताइए विस्तार से। ठीक है, मैं कानून के तहत आपको न्याय दिलाने की पूरी कोशिश करूंगा। मिस्टर मल्होत्रा। हेलो। ठीक है सर, आपके कहने पर मैं आपका बेटी का केस हारने के लिए तैयार हूँ, पर बदले में मुझे उस प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए जो आपका साला को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको है। होकर 20 साल की समायरा नामक लड़की ने की खुदकुशी। सगे मामा पर ही है अपनी ही भांजी के साथ छेड़खानी का आरोप। भांजी को घर पर अकेला पाकर मामा ने करी उसके साथ बदतमीजी। Come in. Have a seat. मेरा नाम विराट बख्शी, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? वो मुझे अपने चाचा के अगेंस्ट केस फाइल करना। आप मुझे पूरी बात क्लियरली बताइए ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूं। आप चिंता मत कीजिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको इंसाफ मिले और आपके चाचा को उनके किए की सज़ा मिले। तो कोर्ट में मिलते हैं। कार्यवाही शुरू की जाए। योर ऑनर, आज तक हमने इस कोर्ट में बहुत सारे मॉलेस्टेशन के केस देखे, पर यह केस उन सभी से कुछ अलग है, क्योंकि इसमें मेरी क्लाइंट आरोही को मॉलेस्ट करने वाला कोई बाहर का नहीं, बल्कि उसका अपना सगा चाचा ही है। मेरे काबिल विराट बहुत अच्छी कहानी है, लेकिन शायद वो ये कोर्ट में कुछ भी साबित करने सबूत दिखाने I rest my case. सभी गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए ये कोर्ट इस नतीजे पर आया है कि आरोही के चाचा ने उसके साथ बदसलूकी की, जिससे ये कोर्ट आरोपी को आईपीसी धारा 354 के तहत 10 साल की कारावास की सजा सुनाती है। थैंक
आपने मुझे ही नहीं बल्कि उन सभी लड़कियों को हिम्मत दिलाने में मदद किया जो अपने इंसाफ के लिए नहीं लड़ पाती हैं और समायरा जैसी कई लड़कियों की आत्मा को आज शांति मिली होगी। ये तो मेरा फर्ज था और आगे भी मैं लोगों को इंसाफ दिलाने की लड़ाई लड़ता रहूंगा। Now moving on to the last film, Ma Durga, a short film on personification of women as Ma Durga and how she fights for her existence and status in life and society. Ma Durga. Shilpa, a small daughter of Bangla village, comes out from her village for searching the soul of Ma Durga. She finds that Durga resides in every woman in city. Ma Durga is everywhere, wherever she goes. She thinks, is Durga a force of divinity or an ordinary woman? Or Durga is someone who's powerful from inside, emotionally strong and capable of handling life's challenges. No problem is too big for her. She is an everyday woman leading an everyday life. She is either put on a pedestal or situated on the margins of a patriarchal society. Why can't she walk the road to equality? It becomes crucial to see how a woman in the present world finds her place. She has to fight for an equal status within the social, economic, political, and even sexual domain which the man takes for granted. No matter how much you try to curtail her, cage her, or drown her, she will only rise and float and fly. A real-life woman that idolizes Ma Durga turns a blind eye to destitute mothers and wives, treating them with indifference and hostility. It makes us all look a tad hypocritical, don't you think? A true woman, she looks tired, but is she defeated? Ma Durga smiles again on end of the day, Dashera, but cries again. Smiles cost nothing when darkness engulfs. The only hope that survives during tough times is the promise of a new dawn. On the last days of Ma Durga, Vijayadashami, every woman plays with sindoor, called Sindoor Khela. Mirth, celebration, music and dance add colors to this small world. Hardship and humiliation she has braved all odds. Nothing can break her undying spirit. There's a story hidden in her eyes. Moving on to the next film, Na Real. The quest to become famous leads the protagonist to go through a realization very aptly depicted in the film. ये ले शूज। किधर से लाया रे? वो शैंते का चुरा के लाया। ये ले पेन। मैं किसी के बाप से भी नहीं डरता है, खुद के भी नहीं, और कोई मुझे हाथ लगाएगा ना, एक एक के टुकड़े कर दूंगा, समझा क्या? अरे क्या रावश डायलॉग बोला रे टीना? 10 के तो फिक्स है। सच्ची में? हाँ, अब पोस्ट कर अभी। हाँ ठीक है। ये चले शूज दे। अरे क्या
भाई ये रे तेरा कपड़ा और ये पैसा। 100 रुपए बोला था ना, बाकी आप 50 का तेरा बाप देगा। अरे भाई थोड़ा फेमस होने देना, फेमस हुआ ना देखो 100 के 1000 रुपए देगा। ए टीना, रील में तो मस्त दिख रहे हो, स्टार बनेगा लगता है। हाँ है मैं स्टार। टीनिया अपना वीडियो बना रही थी और इस दौरान फॉलोअर्स तो बढ़ गए रे तेरे, बड़ा आदमी बन गया भाई। बनाने के चक्कर में वहाँ कोई बड़ी सड़क दुर्घटना भी हो सकती है। इस तरह की एलिवेटेड रोड इस मकसद के लिए नहीं बनाई गई, क्योंकि जिस सड़क पर यह वीडियो शूट किया गया वहाँ से 100 किलोमीटर की रफ्तार से गाड़ियाँ गुजर रही और इस वजह से नियम ये कहता है कि नहीं है पैसा, बोला समझ में नहीं आता, घर में पैसा नहीं है। क्या है ये रोज रोज का झगड़ा? ए भाई तेरा रील देख। मैं किसी के बाप से भी नहीं डरता है, खुद के भी नहीं, और कोई मुझे हाथ लगाएगा ना एक एक के टुकड़े कर दूंगा, समझा क्या? Moving on to the next film, Interview. The film showcases the addiction to mobile and how it can lead to missing opportunities. काली रतिया कभी दिन सुहाने, किस्मत की बातें तो किस्मत ही जाने। ओ बेटा जी, ओ बेटा जी, अरे ओ बाबूजी, किस्मत की हवा कभी नरम कभी गरम, कभी नरम नरम कभी गरम गरम, कभी नरम गरम नरम गरम। ओ बेटा जी, किस्मत की हवा कभी नरम कभी गरम, कभी नरम नरम कभी गरम गरम, कभी नरम गरम नरम गरम। ओ बेटा जी।
Moving on to the next film, Vehem. The film highlights the struggle against social dogma and false notions. अरे ये बिल्ली क्यों रोने लग गई अब? एक तो कल राशि को लड़के वाले देखने आ रहे हैं और इस बिल्ली ने अक्षय को। ऊपर से माने की सारी औरतों ने आके सुबह सुबह मेरी बेटी को नजर लगा दी। राशि, घोड़े पर इसका दूल्हा आने वाला है और ये खुद घोड़े बेचकर सो रही है। राशि बेटा उठ जाओ, उठो। सूरज ढलते टाइम नहीं सोते हैं ऐसे। मैं बिल्ली को क्या बोल रही हूँ या मेरी खुद की बेटी अपशगुन पाले बैठी है। ये बंद घड़ी घर में नहीं रखते बेवकूफ लड़की। अब चल मेरी मदद करा, लड़के वाले देखने आ रहे तुझे। क्या? वैसे तो वो लोग 13 को आ रहे थे परसों, पर 13 को कोई काम नहीं बनते तो मैंने उन्हें कल ही बुला लिया। और आपने ये सब करने से पहले मुझसे बात करने की या फिर मुझे बताने की जरूरत नहीं समझी? आज बताना था पर गली की औरतें आ गई तो कैसे बताती? मम्मी यार, ऐसे नहीं होता। ऐसे ही होता है। चल मेरी मदद कर, जिसके पापा नहीं कहा था। हेलो श्वेता, यार मेरी जिंदगी ना एकदम मजाक बन के रहती है। पहले कब सीरियस थी? देख, एक तो लोग मुझे वैसे बहुत परेशान है, अभी मुझे और परेशान मत कर। यार एक तो पता नहीं क्या हर रोज एक नया लड़का लाके खड़ा कर दी मेरे आगे। और तुम कोई बताओ यार, मुझे शादी नहीं करनी, अभी तो मुझे घूमना है, मुझे एक्सप्लोर करना है। तो तू उनको जाकर बोल ना ये सब। तुझे लगता है वो सुनेंगे मेरी बात? अभी अभी मिर्चियाँ मार के गई है मेरे ऊपर। तुझे लगता है इतना वहमी इंसान कुछ समझ सकता है? तो राशि देखना, तो थोड़ा चालाक बन। पता नहीं यार, अभी तो क्या ही कराएंगे मुझसे। और अभी तो देख लो, कल सुबह तो पूरे घर को सर पर उठा लेंगे वो। राशि, इतना ही काम करते हैं मम्मी, तो अब यही सही। सुबह सुबह आप शुरू कर दीजिए। बैठ, मैं कैसे करूँ? क्या है सीख जी तो शादी के बाबा है ना, मैंने ये काफी से इसे पहन लेगी तो सब कुछ ठीक है। अब जल्दी जाओ। तभी तो बाग आए वहाँ से, जिनके घर शीशे टूटे उनके घर हम रिश्ते नहीं जोड़ते। बिल्कुल सही कहा आपने। मैं तो अपने घर अपशगुन का साया भी ना पड़ने दूं। और नहीं बहन जी, मिल गया आराम से। चलो हमारी बातें तो होती रहेंगी, बच्चों को थोड़ी देर अकेला छोड़ देते हैं। हाँ बेटा, रंज को घर दिखा लो। तो आपको खाने में क्या पसंद है? चिकन बिरयानी। तो आप आगे क्या? मुझे घूमना है, एक्सप्लोर करना है अपनी लाइफ। मुझे पहाड़ों पर घूमना है, मुझे समुद्र पर घूमना है, और शादी तो मुझे बिल्कुल नहीं करनी। आपको शादी नहीं करनी? तो फिर मैं चाय पियो और निकलो। क्या
बताओ तो, ऐसे क्यों कह रही हो? हुआ क्या बेटा, बताओ जरा। मुझे नहीं पता मम्मी, हम लोग तो सिर्फ बात कर रहे थे और वो बात करते करते चले गए। मम्मी ताबीज कहाँ गया? कहाँ गया? पता नहीं मम्मी, शायद ताबीज खो गया तो बाबा जी का आशीर्वाद भी चला गया और इसलिए रिश्ता भी टूट गया। The next film is Cross Fingers, a film depicting the issue of blind faith that can lead to a serious consequences. देखना अब मेरे 6 आने वाले हैं। देखा नहीं आया ना, अब मेरे को देखना, मेरे को सिर्फ एक नंबर चाहिए और मेरी गोटी अंदर। यस यस, देखा मैंने बोला था ना कि मेरा एक नंबर चाहिए और एक ही नंबर आया। अरे वाह यार, ये तुमने कैसे किया? देखा नहीं तुमने, मैं जब भी फिंगर्स क्रॉस करती हूँ मेरा सारा काम बन जाता है। अरे सही है यार, अब से मैं भी ट्राई करूंगा। ओ टीचर आ गए, टीचर। विक्की, ओ विक्की। हाँ मम्मी। सुबह से तू फोन में लगा हुआ है, होमवर्क भी कर लिया कर। लाइट चली जाएगी तब पढ़ेगा क्या? अरे मम्मी टेंशन मत लो, आज लाइट नहीं जाएगी। क्यों, तेरी बिजली विभाग में बात हुई थी? नहीं मम्मी, पर आज चांस कम है। देखा मम्मी, मैंने कहा था ना आज बिजली नहीं जाएगी। अब तो 8:15 बजने वाले हैं, अब तक तो लाइट गई नहीं, अब क्या जाएगी। चल सही है, अब किताब उठा के अपना होमवर्क कर। अरे मम्मी, सुपरमैन होमवर्क नहीं करते। मम्मी मेरे पास सुपर पावर है और जिसके पास सुपर पावर होती है उसे होमवर्क करने की जरूरत नहीं। अब मैं चला सोने। भाई मैडम आने वाले, होमवर्क क्यों तो निकल रहा? नहीं भाई, मैं तो शादी में गया था। विक्की भाई तुमने किया? अरे नहीं भाई, मैंने भी नहीं किया है, बस आज मैम ना आ जाए। अरे आज मैम ने नया टॉपिक कराना है, मैम तो आ जाएंगी आएंगी। अरे भाई रुको, मैं कुछ करता हूँ, देखना मैम नहीं आएगी। ये क्या बालक वाली हरकत है, ऐसे करने से थोड़ी ना मैडम रुकेगी। भाई आज मैम को आने से तो यमराज नहीं रोक सकता। अरे भाई मैं कह रहा हूँ ना कि मैम नहीं आएंगी, ऐसे करने से सब ठीक हो जाता है। एवरीवन, तेजी मैम आज नहीं आएंगी तो आप सब लोग अपना प्रोजेक्ट वर्क कंप्लीट करें बैठ के, ओके? वाह यार, तेरी बात तो सही में सच हो गई। अरे भाई मैंने कहा था ना कि मैम नहीं आएंगी, ऐसे करने से सब सही हो जाता है। हाँ तुक्का ठीक है। भाई यार प्रिया बहुत दिनों से नहीं देख रही है यार, बस आज एक बार देख ले। टेंशन की वजह तो पूरी प्रांति का जमाना ही है वाली, मेरे तुझे पक्का देखेगी भाई। पक्का भाई? देखिए लुटे यार भाई बस देख ले यार एक बार। तेरी नजरों ने दिल का किया जो हशर, असर ये हुआ अब इनमें ही डूब के हो जाऊं पार, यही है दुआ। अरे भाई यार लेट हो रहा है यार, कब आएगा? हम तड़के तो इतनी दूर तक आ गए, कहाँ रह गया? भाई इसका रोज का यही है, कभी टाइम से नहीं आता है। नहीं आ गया। हाँ इतनी जल्दी आया? It takes time, mate. भाई अब थोड़ा आराम। अरे भाग मत। मरना बाहर कर भाई, इतना सुबह से बहुत भाग रहा है तू। है भाई रोनाल्डो हूँ तो भाग रहा, भाग 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 भाग।
शाहरुख है भाई। भाई कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा भाई। ठीक है तो ठीक है। अरे भाई आना है, अरे आना भाई ना है। भाई बचा लेंगे इसको, जल्दी यार। भाई भाई उठ उठ, मैं दिखाऊंगा, हम दिखाई दे। चल 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 चल, उठ 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 उठ। भाई कुछ नहीं होगा, चल भाई आ जा यार। भाई हम बचा लिए इसको, आ जा। भाई 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 उठ जा भाई, भाई उठ उठ, चल चल चल। टूटा एक तारा गुम गया है बादलों के पीछे, जाने की हो जैसे उसे जल्दी। तुम भी कुछ मांग लो जो है मन में तुम्हारे, जाना हो ना जाए कहीं तुम्हें देरी। शायद ऐसा मौका मिले ना मिले, फिर रह जाए अधूरी ख्वाहिश। क्या पता हो ये भी। भाई भाई इसे क्या हो गया, ये उठ क्यों नहीं रहा है? अब बहुत सारा तुझे जब से कहा तुझे बुलाने लगा था मैं इतनी देर से, आया क्यों नहीं? बंद करने मरवा दे तूने हमारा भाई। है भाई? अरे क्या भाई, तू जब यूं करके बैठा था, क्या है ये चीज? है बता ना भाई। ऐसे करने से सब सही हो जाता है भाई। क्या सही होता है? क्या है ये कि तुम्हारे अंधविश्वास कुछ नहीं होते भाई ये अंधविश्वास नहीं है। मैंने कल किया था तो मेरे घर की बिजली नहीं गई थी यार। भाई वो हमारे घर की चली गई थी, बिजली गलती से हो गई थी। अंधविश्वास है चक्कर मारा भाई, मरवा दिया तूने। चले ऐसे। अब तक आपने देखा कहानी का पहला पहलू। आइए आपको ले चलते हैं फ्लैशबैक में और दिखाते हैं कहानी का दूसरा पहलू। घर से फोन। हेलो, हाँ मम्मी प्रणाम। इमरजेंसी है? हाँ ठीक है, एक इमरजेंसी है, आप मेरी क्लास ले लेंगे। अंधविश्वास अज्ञानता या भय से उत्पन्न एक तर्कहीन विश्वास है। The next film is We Look Up to the Sky. As the life progresses, the agonies and pains of life are universal, yet one goes on and on. মই গুচি যাম, মই যাবই লাগিব মোৰ অস্তিত্বৰ কাৰণে। এই সংকট মই দূৰ কৰিম, আকাশলৈ চাম আমি। মই যাওঁ, মই সকলোৰে চকুত দুখবোৰ দেখিছোঁ, মই যাবই লাগিব। আয়ে কৈছে মোৰ চকুলেও এবাৰ চা। দুখবোৰ কষ্টবোৰ কিমান ব্যক্তিগত
কিমান সাৰ্বজনীন। মই যি ভাবোঁ সেয়া কিমান ব্যক্তিগত, কিমান সাৰ্বজনীন, আৰু মোৰ সমাজখনৰ কাৰণে থকা চিন্তা তেন্তে মোৰ আইৰ দুখবোৰ কিমান ব্যক্তিগত নাজানো। এই যুঁজত কি পাম কি হেৰুৱাম মই নাজানো। কিয় গৈ আছো মই নাজানো। হয়তো ধূসৰ মোৰ কেউদিশ, হয়তো এয়াই সেই আমন্ত্ৰণ, মোলৈ অমুক আহ্বান। মোক কিহে টানিছে মই নাজানো, কিন্তু মোক টানিছে। অথচ মই কাৰো পৰা একো প্ৰতিদান অথবা প্ৰতিশোধ বিচৰা নাই। সমাজৰ স্বাৰ্থত চোন আয়ু বন্দী। মই একো বুজি পোৱা নাই। The next film is In the Blues. The motive of the film is that despite all the cruelties met to the animals, especially dogs, in time of distress, they are always compassionate towards us.
Moving on to the next film, India Sign Language. Women's safety is a major issue, and the short film very aptly describes the danger of life of a woman who is not able to speak. There is no language of help. It is a story of every woman in the country. अरे हाँ कौन हो मैडम? क्या? कोई नहीं है, हटो हटो, छोड़ो मेरे को, छोड़ो छोड़ो। राजधानी दिल्ली स्थित द्वारका सेक्टर 9 से एक दिल दहला देने वाली खबर है, जहां कल रात के 9:30 बजे एक लड़की का बड़ी ही बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। लड़की का शव आज सुबह ही मेट्रो स्टेशन के पास स्थित जंगल से बरामद हुआ है। सूत्रों के द्वारा पता चला है कि लड़की ना बोल पाती थी और ना ही सुन पाती थी। इस वारदात से जुड़ी तमाम नई खबरों के लिए बने रहें एपीजे न्यूज़ के साथ। The next movie is Study of Gestures and Body Language. The film speaks about how facial expressions and body posture speaks more than words. Moving on to the last film, Goldie, an emotional relationship between a fish named Goldie and a boy. पापा देखो कितनी खूबसूरत मछलियां हैं। वाह पापा, ये गोल्डन वाली तो बहुत अच्छी है। मैं इसका नाम गोल्डी रखूंगा। थैंक यू पापा। वाह, ये है विविध भारती। इसको बहुत संभाल के रखूंगा।
हूँ, आप सुनेंगे थोड़ी ही देर में। वाओ, कितना खूबसूरत लगता है। छाया की देखो ये गोल्डी मेरा बेस्ट फ्रेंड हो गया है पापा। शर्मा का नमस्कार। पापा क्रिकेट खेलने चले? बादलों की रुई से काटती है रात, बारिश के सूत, चांदनी निचोड़ कर सुनहरा रंग बन जाती है। पापा गोल्डी को यहाँ रखते हैं, गोल्डी भी मुझे खेलते हुए देखेगा। बतियारे और नदी पुल पर पालती जमाए पाषाण, तल्लीन मेरा गोल्डी लहरों का संगीत सुनो। पापा गोल्डी तड़प रहा है पापा, गोल्डी को पानी चाहिए। हेलो नमस्कार, मैं आयुष शांडेले आपका स्वागत करता हूं एल्कॉन पब्लिक स्कूल कम्युनिटी रेडियो स्टेशन FM 90.4 मेगाहर्ट्ज से। और आज के दिन फिर वसुंधरा एनक्लेव में समर विलेज स्कूल के सामने दिल्ली जल बोर्ड के द्वारा पानी की व्यवस्था की गई है। और ये व्यवस्था 5 से 6 बजे के बीच रहेगी और पानी पूरा शुद्ध और सुरक्षित आ रहा है। पानी का टैंकर आया होगा पापा, जल्दी। कितनी भीड़ है यहाँ पे, गोल्डी को बचाओ पापा, गोल्डी को बचाओ जल्दी पापा जल्दी। गोल्डी इसको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। आई एम सो सॉरी गोल्डी, आई एम सो सॉरी। Moving on to the advertisements. Bhutiya Paid. Ad film on Vodafone Idea. पंडित जी, हमारे गांव में आत्मा का साया है। क्यों आई है हमारे गांव में आत्मा? क्या चाहिए तुझे? ऋताऊ, जो क्या बोले हैं? जो भी प्रेत आत्मा है, चली जा इस गांव से, चली जा इस गांव से। किसके पल्ले पड़ेगी ये प्रेत आत्मा की भाषा? अब प्रेत आत्मा की भाषा तो हम नहीं समझ सकते, लेकिन बाकी भाषाओं की सुविधा के लिए VI है। भाई भूत भगाने वाला झाड़ू लेके देखेगी, यो कित मिलेगा? बगल वाले भगवान किराना स्टोर पे। The next video is on Swiggy, Chef on the Go. अभी से मैं मिली नहीं। I thought he's a changed man. First time I met Abhi, she met the same. I'll get it. Oh, come in. Did you guys see? I told you the service now. Service. It better be a good one.
Introducing Swiggy Chef on the Go. Culinary experts creating magic at your kitchen. Savor and experience customizable, hygienic and elevated delicious food in the comfort of your home. Press the chef icon on the Swiggy app. Select the cuisine you want and choose amongst the various chefs categorized by experience and expertise. Book your own personal chef today. So the last video is on Taj. She secured, she secures.
क्या मैं ईगल वो तो है ना, हम दोनों जमीन पे ये तो एक्सपेक्टेड। अरे मैडम आ देख मुझे पैसे आएंगे, आप दिक्कत भूल जाओगे तो आप गारंटी लेके आप नहीं भूल उससे पर्ची करा क्या 100 में क्या मैंने कही मैं बैग नहीं था।
This guy is so talented, मैं उसको बोल रहा हूँ मुझे अपना नंबर दे के रखूँगा, become a star, singing star, anchor, सब है ही। So कम से कम कोई कुछ टाइम के लिए मैं सब I just meet this kid. I didn't know she is acted in a movie. हाँ मुझे भी मॉर्निंग में पता लगा। And she is. Start please. बेटा मैं ये चेयर्स भी इधर लगा दूँ। ये भी इस तरफ भी लेकिन पता क्या वो बीच में फोटो मारता और इधर वाला दिखता भी नहीं है। कौन सा लोग ना? Thank you for joining us. Everyone, please be seated. सर ने बोला था वो उसके चलाने के लिए। Now we would like to screen 2 short films from FTI.
That was such a great room indeed. Now we have come to the end of our program, the much awaited award ceremony. And for the award ceremony, we have with us. For the award ceremony, we have with us our Honorable Vice Chancellor, Professor Dr. Sanjay Srivastava, sir. Thank you so much, sir, for joining us. We know that you all are eagerly waiting for the results. So I would like to invite Mr. Vijay S. Jodha, sir, to say a few words about the entrance. films which are being made in a very, very modest manner. It's not like some fancy budget or something. So, to some interesting idea within those constraints is very, very credible. Two, three things I want to say, and I say that because I am involved with a jury work in various festivals, not just to see a lot of films made by professional as well as this is the advice I have for every student filmmaker, that try not to confine yourself just to a film festival. Don't make that as your end goal. There are festivals here, there are festivals in other parts of India. So you see the film you're making, whether it works well for you, if it is shown not in Delhi but in Kerala, can people relate to it? If they can't, then what do you need to do to make it more relatable? Perhaps have better subtitles, maybe make the subject more obvious, etc. And then go beyond that, try to work all over the world, and you have something called student Oscars happening and people from India have got involved with a filmmaker who made a movie in Pushkar years from Ajmer, and that was got a nomination to one of the 5 best films made in the world. So, and that was made in Rajasthani of all things. So it is possible to really go on, and it gives you a sense of how you can take your work everywhere. This is the problem we have in India, not with student films, it is an issue with virtually every field, and even films we have that problem. The biggest Bollywood movie being made, if you look at it, all the Shah Rukh Khan, Salman Khan movies, if you talk to the producer, they are also thinking very small. They'll say, वो जो दबंग बनाई थी उसका जितना मिल गया था उसका हाफ आ जाए, I'm happy with that. So they are not thinking that I want to make the next Top Gun sequel or something like that. So they are also thinking very small that okay, just the Indian audience here, maybe some NRI audience, maybe some Pakistani audience, a little bit Dubai, a little bit East Africa. I'm happy with that. You have to really think like the whole world is open to us, and if you saw this year what happened. Telugu movie RRR, the way people can relate to it so well, it's unbelievable. That's a very good inspiration for all of us. So try to, even in the student film sense, try to think that we ensure that you're using original material. Now you have all this royalty-free material available online, very first-rate graphics, music, stock footage, all of that is there. So make sure it's all in place, because when you make your films, you send it somewhere, if there's something that you've taken from some other film which you don't have rights to, then your film is going to get disqualified. Somebody meets you and likes your work, wants to put it on television, but then that rights are not clear. So it's a good practice to start from right away. And no matter which film school you go to, your films, whether they get an award or don't get an award, if they are good films, when you go out, that is your calling card. Your degree, your diploma will not count so much as the film will count. Because it's giving a sense to people, okay, this guy is, even if it's not a great film, people can see, yes, this guy is interested or this lady is interested in cinema in a very serious way. So that's a good way to go for. Obviously, we have limitations, so everybody cannot be given an award. So those who didn't, please don't feel disappointed with the whole world out there for you guys. Thank you.
request all the dignitaries to come on stage for the final results and the award ceremony. Documentary film, the second prize goes to Bhav Anubhav. Am I right? Yes. Okay, that's not the institution. Am I right? So in the documentary segment, the first prize goes to Saha Journey of Chai from Asian Academy of Films and Television. This is for the short film. Second prize goes to Red Alert, Bennett University. First prize for short film is Lipstick.
second prize goes to Shavik from FET MRIS. The first prize goes to Manohar from FMCH MRI. We have a special mention prize going to Karamhomi by AC Bose University. Heartiest congratulations to all the winners as well as the participants. We truly appreciate your creativity and efforts. We can't thank you this enough. We sincerely hope that this event has been as galvanizing for the jury as it was for the students, and we hope that all of us have been tremendously inspired and motivated to explore the art of making films. We now invite Professor Dr. Kiran Bala, Head Department of Journalism and Mass Communication, to extend a formal vote of thanks. These festivals and occasions which we are enjoying since decades. And these are the platforms which provide opportunity to the students to showcase their talent. Many of you, I hope those who have won the prizes or those whose films were screened, they are our budding filmmakers, and maybe tomorrow will say, oh, that Arvin boy, that girl, she was my student. So expecting
hoping that with that, positive thing in my mind, I want to thank, first of all, management of MRIS for providing us this opportunity to hold this film festival amidst, so many things going on. We have our exams. We are starting from next week, but we got the permissions to organize here. And indebted to our Vice Chancellor Sir, Registrar Sir, Provisy Sir, who helped us in getting all the permissions for the festival as well as for this venue. Highly thankful to Dean Ma'am. She was constant motivation behind our department. She helped, she guided, she advised it each and every step. Wherever we were like, करेंगे नहीं करेंगे कैसे करेंगे with such small workforce today when 3 faculty members are not there due to some major problems in their families, but still we were able to manage the show very well with her blessings and with her motivation. A very warm thanks to Director Ma'am, Dr. Shivani. For small things she was telling me, so which I wasn't thinking about that. So she guided at each and every step. Yesterday also we had a long discussion. So but she guided me, finalizing the program schedule also that we were discussing. And thanks to DJ and security, those who were present here or those who couldn't make it at last moment because of their personal problems. Without you, this show wasn't possible. And Suman, I think she has eaten anything since morning. Since morning she is here. I'm telling her to eat something, but she's like, "Nahi, ma'am. Let me finish it." So, and thanks to our students, those who are working since last 1 week, 10 days, day and night, going to market, buying materials, doing so much work, missing their classes. Teachers are scolding their class miss kar rahe hain, limits show kar rahe hain, but still they were working. And today also they managed when in the morning when Dushyant wasn't here. Thanks to Ravinder also, because at such a short notice he was able to make it. She reached here and click those moments. Thanks to all, and I hope we'll continue with this journey and we'll have more such programs where students they will learn and all of us will enjoy also. And thank you so much. Noting it down, I'll come. Then again, sir, postpone हो गया है. Can you come on this date? And he agreed upon, and it's been a long association with him. We wanted to have a workshop with him today, but some other time we'll surely have. And Ram Narendra Yadav, sir, it's always, today we would have listened to him also because of shortage of time, we couldn't listen, but he's a very good speaker. We have been, in many panel discussions together, so I have heard him many times. And Vijay Lokpalli sir, of course, he is, constant with us. Not only energy source, so much motivation at this age. He keeps on inspiring us. Age is just a number. Thank you, sir. Let's take a minute for my students. I've seen a very vibrant side of this class. My only complaint is, why do they come to my class with such disinterested faces? I am so happy to see you in this new avatar, if I can call it. Very, very gifted, very talented. All the best. Teaching them film journalism. They will, festival, in my understanding, has to be very on your feet. But
feel fine. What do you say? This is, this is what's okay, everybody's sort of coming up. And I think we are going to be moving towards a situation where we are going to be really moving guys. We make films not for just awards, we make films for the difference that it makes to humankind, to us individually. As I said, I really make films like a conversation that we have. So let the conversation really begin, and your next year annual Avlokan should be at an international level. That's the expectation you have set today. All right? Thank you so much, Kiran. Thank you so much, Rupali sir. Thank you, ma'am. Team, ma'am. We thank everyone for their valuable time and contributions and look forward to many more such enriching events in the future. So may everyone please stand up for the national anthem. National anthem. Jai